let's try and understand कि इसका वर्कआउट मेंस के लिए करना कैसे एग्जैक्टली. So as far as the internal security is concerned, 4 questions आमतौर पे UPSC मेंस में आते हैं. And these are the documents that I have shared with you. अब इन डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट ऑफ लेट्स ट्राई एंड सी कि पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस कैसे हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग. सो इन दैट एरिया यू वुड नोटिस कि 2022 के अगर आप क्वेश्चन देखोगे, discuss the types of organized crime, then discuss the linkages between terrorist and organized crime that exists at the national and international level. 10 नंबर का क्वेश्चन है. आमतौर पे ये देखा गया कि 50 मार्क्स के आसपास की आपके पास इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट एरिया इज व्हाट आर द मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया. ये इंटरनेशनल रिलेशन के साथ कनेक्टेड ही है. Discuss the organizational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security. तो इसमें हमें अलग अलग हेडिंग्स बना के बताना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट कौन से हैं और टेक्निकल कौन से, प्रोसीजरल कौन से, लाइक दिस. देन व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी. फर्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी डिफाइन करने को नहीं बोला, एलिमेंट्स पूछें. Then keeping in view the challenges in cybersecurity, examine the extent to which India has successfully developed a comprehensive national cybersecurity strategy. तो extent पूछा है, अभी हमारा full fledged तो नहीं बन पाया, तो that's why they are asking what are we able to handle. Then naxalism is a social, economic and developmental issue manifesting violent internal security threat. In this context, discuss the emerging issues and suggest a multi-layered strategy to tackle the menace of naxalism. आमतौर पे डबल एज स्ट्रैटेजी बोलते हैं, डेवलपमेंट प्लस एन आयरन हैंड, दोनों चीजें चाहिए, तभी जाके हम नक्सलिज्म के मेनेस से ठीक से डील कर पाएंगे. तो दैट्स हाउ इट इज जनरली टॉक्ड अबाउट. सो इफ यू नाउ जस्ट हैव अ टॉपिक ओरिएंटेशन, नक्सलिज्म, साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, 4 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार जब यूपीएससी में इसको पूछा गया. अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक्स. Keeping in view the internal security, analyze the impact of cross-border cyber attacks. So again, cyber security is a repeating issue. Also discuss defensive measures against these sophisticated attacks. Analyze the multidimensional challenges posed by the external state and non-state actors, जैसे MNCs, NGOs, terrorists, all are non-state actors only. To the internal security of India, also discuss the measures required to combat these threats. ये हमने टू एन एक्सटेंट IR में इसका जो नॉन स्टेट एक्टर्स को भी ना 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं. एक है वायलेंट और दूसरे नॉन वायलेंट, वाइट कॉलर जिसको बोलते हैं. क्या? सो दे आर मोर वाइट कॉलर क्रिमिनल्स. वाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं जो ज्यादातर फाइनेंशियल लेवल पे क्राइम करते हैं. दे आर कंसिडर्ड एज वाइट कॉलर. ओके, सो इन सबके केसेस के अंदर वी हैव टू डील विद इट. अब यहाँ पे कोई ऐसी कैटेगराइजेशन तो नहीं दे रखी, so that's why we have to deal with both. Next is analyze the complexity and intensity of terrorism, its causes, linkages, and obnoxious nexus. Also suggest the measures required to be taken to eradicate the menace of terrorism. एक चीज पे ध्यान देना चाहते हैं हम. मुझे ये बताओ कि ऊपर हमने 2 साल के पेपर देखे, करंट एस्पेक्ट कितना है और स्टैटिक कितना है. अगर मैं इस पेपर ये वाले को देखूं तो इट्स हार्डली एनी करंट एस्पेक्ट. अगर मैं करंट एस्पेक्ट की बात करूं तो सिर्फ एक क्वेश्चन में ऊपर पूछा गया था जहां पे इनिशिएटिव्स की बात की गई है कि मैरिटाइम सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उनको बताइए. दैट्स इट. तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ना लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है. करंट बिल्कुल अभी पिछले 1 साल में क्या हुआ या पिछले 6 महीने में क्या हुआ वो टू एन एक्सटेंट चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए. तो समझ ही आती है ये वाले क्वेश्चंस देखने के बाद. ठीक है, अब अगर और आप क्वेश्चंस देखना चाहें तो यू कैन गो थ्रू देम. आई हैव गिवन देम राइट अप टू 2030. बट द जनरल टेंडेंसी हैज बीन कि 5 क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं. 50 नंबर का सिक्योरिटी का कंपोनेंट है. अब जो मैंने ये नोट्स आपको दिए हैं, दे आर कवरिंग बोथ द स्टैटिक एंड द डायनामिक एरिया. कुछ एड ऑन दिया है लाइक दिस एनुअल रिपोर्ट ऑफ MHA. तो एनुअल रिपोर्ट ये वाली जो है 2021-22 की है.
इस बार इन्होंने इतना टेंशन नहीं लिया, 22-23 के लिए अभी रिपोर्ट आना बाकी है। दिस हैज कम बैक इन, अगर आप यहाँ पे डेट नोटिस करोगे ना, तो नवंबर 2022 में रिपोर्ट रिलीज हुई थी, 24 नवंबर 2022 इज द डेट ऑफ द रिपोर्ट। और जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट इनका आया है वो ये है 3 अप्रैल 2023। अब ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, द सेकंड वन दैट आई शेयर्ड विद यू, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 8 years of what the Ministry of Home Affairs has been able to achieve. So this is something that you would want to go through first, because ये आपको डायरेक्ट एग्जांपल्स दे देगा कोट करने के लिए, जैसे कि J&K, what we have achieved so far, a new dawn of progress and peace. सीधे सीधे से पॉइंट्स हैं यहाँ पे। Ladakh steps ahead, so decade long desires of Ladakh fulfilled, northeast on the road of progress, decisive battle with left-wing extremism, drug-free India, war on terror, strengthening the federal structure, government strict on cybercrime, forensic science. ये पूरा 8 years का प्रीव्यू लेके चल रहा है। So this is the document I would want you to go through second. एक आपका मेंस वाला डॉक्यूमेंट और एक ये वाला डॉक्यूमेंट, बस जो आपको सिक्योरिटी के लिए करने हैं, ये दो कवर करने हैं। और ये तो ज्यादातर फोटोग्राफिक है, इसमें कंटेंट कम है पढ़ने वाला, ठीक है। So let's quickly go through all the issues that are there and how they are discussed. You see, first off, Jammu and Kashmir. So a new dawn of progress and peace. Constitutional Amendment Article 370 और 35A इन दोनों को abolish करता है. What did it do? So equal federal rights to Ladakh and Jammu and Kashmir from 5th August 2009. Merger of central administrative officers with AGMUT cadre. तो जो जम्मू एंड कश्मीर का कैडर अलग होता था वो एगमुट के अंदर जोड़ दिया गया, यूटी कैडर्स के अंदर। वन नेशनल फ्लैग पहले अलग था, सिंगल सिटीजनशिप, वन लॉ, कश्मीरी, डोगरी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, so these are the recognized state languages now. Then establishment of a central administrative tribunal. So all this has happened under the recent Constitutional Amendment Act with respect to J&K. Now other improvements क्या हैं? Zero tolerance strategy related to security in J&K. Let's see. So strict implementation of the law. अब ये सीधे points हैं जो आप means में आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। Okay, how has the J&K situation improved after it became a UT in terms of security? Modernization and strengthening of security equipment, hard hit on terrorism and increase in counterinsurgency operations, trying to bring youth power into mainstream by controlling radicalization, strict ban on glorification of terrorists, introduction of impregnable prisons, crucial role of J&K police. So these are the other improvements which have been made. Now, what are the effects of abrogation of Article 370? First, so lesser terrorist act and terrorism has lost courage. So as per report of MHA, you can cite this report also officially in your paper. So the acts of terrorism has reduced to 654 right after 5th August 2019. अगर पिछले 3 साल की एवरेज से कंपेयर करें तो 14% reduction in death rate, 52% reduction in death of security forces, 14% reduction in admission of terrorists, मतलब नए लोग जो terrorist बने. So the above data makes it clear that the nullification of Article 370 security system has become more alert and acts of terrorism has been reduced. अगर डेटा याद ना रहे तो जनरल बात भी कर सकते हो, कोई भी 1% ऊपर वाले में से याद रख लो, दैट विल डू, ठीक है। नेक्स्ट, so security conditions, how they have improved. So 60% reduction in acts of terrorism, जो अगर पूरा 8 साल का वर्कआउट है। 42% reduction in intrusion of terrorists through borders, 94% reduction in stone pelting, पत्थर बचे भी कितने होंगे अब तो। ये वाला डेटा ना मोर पॉलिटिकल इन नेचर है, ठीक है, तो इसको इतना याद करके फायदा नहीं। जो ऊपर वाला है ये वाला डेटा, दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज। 32% रिडक्शन इन एक्ट ऑफ टेररिज्म आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, बस इतना याद रख लेना, बहुत है, दिस मच इज गुड इनफ। बहुत ज्यादा डेटा भी कई बार क्वेश्चन को अनटाइडी बनाता है। नाउ व्हाट ऑल स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट इन J&K, ये वाला पार्ट आपका जीएस पेपर 3 में भी यूज हो सकता है टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, एंड सिक्योरिटी इश्यूज में तो हो गई होगा। तो लेट्स सी। So J&K tourism policy 2020 was notified after the abrogation. In the first 6 months of 2022, about 80 lakh tourists visited J&K.
In May 2022, the footfall stood at 22 lakh. So within just 2-3 months, इतना ज़्यादा response है. International flights from Srinagar to Sharjah started in October 2021. Then night flights have also been resumed. पहले नहीं चलती थी JNK के अंदर. Then the tourism department identified 75 offbeat destinations and is developing basic facilities in them. About 17.5 crore rupees assistance have been provided to people connected with tourism industry who were affected by COVID. 42 crore allotted by the government of India for development of Hazrat Bal Shrine. So a lot of tourism development initiatives are being taken. Then percolation of democratic system to panchayats. अब क्योंकि पंचायत polls already हो गए, तो उसको यहाँ पे signify कर रहे हैं. So in J&K Panchayati Raj Act was amended and District Development Council was created. पहले ये DDC का कोई वहाँ पे role नहीं होता था. In November-December 2018, election was held in 9 phases without any violence with a 74.1% poll. 2019, first time in the history of Jammu and Kashmir Development Block Council elections were held peacefully without any violence with 98.3% poll. So that means people are actually wanting to participate if the elections happen there. Yes. Then 1867 elected members of PRIs were trained and taken to an exposure visit. In the last 2 years, with the help of local bodies, development work of about 1455 crore have been done. So, काम करना भी सिखा रहे हैं. 3160 works have been completed by local body works. So basically decentralization चल रहा है. अब इसके लिए सारा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, जो थोड़ा बहुत रह जाए चलेगा. The completed work has been geotagged, basically geographically tagged. A provision for compensation of rupees 25 lakh has been made for the financial protection of families of the Sarpanch, Panch, BDC president in case of death in terrorist attack. तो पहले ही लिख के देगा, अगर एक तरह से अगर टेररिस्ट अटैक वगैरह में कुछ होगा तो इतना आपको मिलेगा. Package for progress. So what has been done for J&K so far? So 63 projects of foreign investment of above 80,000 crore rupees, 53 projects worth again a lot of investment. So combinedly, you can just put it like this, that around 1.5 lakh CR investment projects have been cleared. इतनी सी बात सीधी तौर पे कर सकते हैं. Then focus on basic structure. Basic structure means basic infrastructure है, like electricity, roads, irrigation, water, sanitation. तो उसको लेके क्या-क्या efforts चल रहे हैं. तो electricity generation के लिए projects to generate 5,000 megawatt of electricity in next 5 years is in progress. इतना याद करके फिर सिर्फ इतना लिखना है, कीरू, कार, शाहपुर कुंडी एंड MPP. बस आगे का कुछ याद नहीं रखना कि ये कितने मेगावाट का इंडिविजुअल है, कितना नहीं है, बस इतना याद रखना मींस. Then irrigation projects. So main river canal project, Tral lift irrigation project, third phase of flood management on Jhelum. So just remember Jhelum, Tral और रावी, इन 3 लेवल्स पे इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं. सिर्फ रिवर का नाम लिखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि इसमें कितना पैसा खर्च करें. एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क, इतना ही लिख दोगे तो बहुत है. अगर ये भी लिख दोगे कि उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक, तो दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, मोर देन सफिशिएंट इन मींस. सी वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज डूएबल. क्या याद रहेगा एंड ऑफ द डे लिखने के लिए, तो उतना ध्यान रखना. देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. So as far as industrial development is concerned, so declaration of J&K industrial policy, Jammu Kashmir private industrial property development policy, and Jammu Kashmir industrial land acquisition policy. So these 3 policies have been declared, and based upon that, धीरे-धीरे काम होगा. Okay, बस इतना, सिर्फ policy वाला point याद रखना है इसमें. Then local products encouraged. So GI tagging of saffron and basmati rice ensures effective domestic and international market. बासमती राइस का जो जीआई टैग है ना इंटरनेशनली, वो पाकिस्तान ने ले लिया. तो लेकिन एटलीस्ट हम नेशनल लेवल पे तो ये एफर्ट्स कर सकते हैं ताकि आगे जाके हमारी कुछ राइट्स प्रिजर्व रहें, इकोनॉमिकली एक ब्रांडिंग बने. देन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ जीआई फॉर गुच्ची, दैट इज गुच्ची मशरूम. ओके, सोलाई हनी, रेड राजमा एंड बीन्स इज इन प्रोग्रेस. सो वेरियस एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ऐसे लिख सकते हो, सच एज सैफरन, बासमती राइस, जो याद आ रहा है. ठीक है. Then
Expansion of apple tree plantation on high density to include mangoes, lychees, cherries, walnuts. So again, horticulture development. Efforts for betterment of the breed of world famous Pashmina goat through genome sequencing. Then under the banner of National Saffron Mission, saffron harvest has been expanded from 0.88 kilometers per hectare to 1.545 hectare. Then one district, one product list has been notified. तो वहां पे भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट को डेवलप करेगी, ये उसके लिए होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. तो जनरली लोकल प्रोडक्ट्स के लिए आप इसको ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, दो तरह से इसको डिवाइड कर लो, तो अकॉर्डिंगली एक पॉइंट बन जाएगा दोनों का. ठीक है, एग्रीकल्चर में जीआई टैगिंग प्रमोट कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के लेवल पे R&D प्रमोट कर रहे हैं. लाइक दैट यू कैन रिमेंबर. एक बीच में नेशनल सैफरन मिशन का एग्जांपल डालोगे तो नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे. देन एजुकेशन फैसिलिटीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज ushered in a ray of hope for the youth. So ओवरऑल अभी किस तरह का है, 1947 से लेके 2014 जब इस तरह से बात की जाए तो वो दिखाना चाहते हैं कि हमने पिछले 8 साल में क्या अचीवमेंट किया. तो पहले सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थे, अभी 9 मेडिकल और 15 नर्सिंग कॉलेज हैं. इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. जस्ट से इन अ जनरल वे that the number of educational institutions has increased dramatically in the last 7 to 8 years. Just put it like this. ठीक है, so don't need to go through all this data. ये सब नहीं चाहिए, just put it as it has increased dramatically. उतना बहुत. Then पॉइंट होना चाहिए कि हाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की संख्या बढ़ी है, सीट्स बढ़े हैं. Employment opportunity. So a new industrial development project has been initiated with the vision to create 4.5 lakh employment opportunities. Government has constituted the instant recruitment committee to maintain transparency in recruitments. ये जो J&K civil services हैं उसके अंदर 26330 posts have been identified and recruitment process of non-gazetted 4th grade staff has begun. Selection process of 11324 gazetted officers has been completed. Then 1,38,000 approximately persons benefited from the self-employment scheme. 4,500 youth clubs were established. Village livelihood mission has been started with around 56,000 self-help groups. ज़्यादातर women related self-help groups हैं. Then women entrepreneurs are being trained and provided financial support under Tejaswini program. ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, ये आमतौर पे बच्चे मिस आउट करते हैं. तेजस्विनी प्रोग्राम एंड सो ऑन नहीं लिखेंगे, तो आप वो इकट्ठे करके लेके जाइए. यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट की खूबी यही है कि गवर्नमेंट का दिया हुआ डॉक्यूमेंट है तो इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास. Young boys and girls are guided for competitive exams by popular coaching institutions under the banner of the Pravaz program. तो इन्होंने टाई अप किया हुआ है कोचिंग के लिए. Then training of women entrepreneurs and connecting them with world market has been initiated under Hosla program. तो तेजस्विनी एंड हौसला ये दोनों वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए. न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सिनेमा हॉल्स आफ्टर 30 years. So okay. Then deprived ones got their rights. So after the abolition of Article 370, the scheduled castes and scheduled tribes, women, senior citizens, got all the rights enjoyed by the people in the rest of the states in India. So social welfare के level पे, the hill community got 4% reservation after the amendment in the reservation rules. पहले ऐसा नहीं था. The facility of direct recruitment and entry, which was limited to the villagers near LOC only, was extended to the villagers near international border as well. 10% reservation provided to financially weaker section. वही जो EWS था पहले उधर अप्लाइड नहीं होता था, अब हो रहा है. Sanitation workers benefited from changes in the domicile law as the new provision allowed them to avail job opportunities in government sector while opening many other avenues. As far as scheduled tribes are concerned in J&K, the scheduled tribes and other traditional forest dwellers law 2006 was implemented. पहले ये J&K में अप्लाई नहीं होता था. In association with TriFed, Pradhan Mantri Van Dhan Yojana MSP for small forest products was implemented. ये essentially क्या है कि जैसे हरियाणा में ये क्वेश्चन आया था HCS के अंदर, जो तो सपोज हमारे पास ग्रेन्स हैं, wheat, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा, उन सब की तो प्रोक्योरमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
किसकी? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में, और उसकी अगर MSP लेवल पे कुछ प्रोक्योरमेंट करनी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है NAFED की। और अगर कोई ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उनको अगर प्रोक्योर करना है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्राइफेड की। देन स्टूडेंट्स ऑफ गुर्जर Pakrawal communities received 100% coverage on pre-metric and post-metric scholarships. ये जो गुर्जर हैं, ये इनको राजस्थान में भी आरक्षण दिया गया था, अभी यहाँ पे पहली बार में, पहले नहीं था। Then for the students of the scheduled tribes, the target of 100% disbursement through direct benefit transfer will be completed shortly. तो basically इनको जैम ट्रिनिटी से जब तक नहीं जोड़ते तब तक मुश्किल है, तो धीरे धीरे कवरेज हो रही है। About 31.12 crore has been spent on the scholarship of tribal students in the year 2021 to 22 till now. In September 2021, tribal youths were provided with 800 mini sheep goat farms for their livelihood. ये वाला जो प्रोग्राम है ना, ये NABARD चलाता है। तो लाइव स्टॉक रेयरिंग के लिए वो कैपिटल लिंक सब्सिडी प्रोवाइड करता है, तो उसके बेसिस पे आप अपना प्रोग्राम चला सकते हो, लोन्स भी प्रोवाइड होते हैं। Then under the tribal health program, the work on the establishment of the network tribal sub-centers and mobile health centers is in progress. Mobile veterinary health program has been started, and that's it. Basically now 29 cluster model villages ये भी establish किए जा रहे हैं, जहाँ पे dairy, livestock, education, R&D सब कुछ साथ में करें। Apart from this, 6 Eklavya model residential schools have been started in J&K. So all these are the initiatives. इसको चाहे तो वो social issues में पूछ लें, ये सारे recent initiatives taken by government for improvement of social issues in J&K, या फिर आप इसको जैसे भी J&K के अंदर क्या प्रोग्रेस हुआ आफ्टर दैट, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो जितनी भी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उन सबको अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब ये दो तरह से आप यूज कर सकते हो। एक तो फ्लैगशिप स्कीम्स की आपकी रिविजन हो जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन क्या करना चाहता है? ओपन डेफिकेशन फ्री। अब J&K के अंदर कर रहे हैं तो J&K इट्स लाइक दिस। तो व्हाट स्कीम इज डूइंग व्हाट इज द एम, बेसिक एम, तो वो इसके थ्रू पता लग जाएगा। एंड दीज आर फ्लैगशिप स्कीम्स, कौन कौन सी हैं वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, देन 17% target achieved in the individual beneficiaries program. So under the Gram Swaraj program, 4 projects, Saubhagya, Indradhanush, Ujjwala and Ujala, achieved their targets. 3 programs in social security successfully attained their targets. 5 scholarship programs are there. PM Mudra Yojana is there. KCC is there. So कितने % achievement of target चल रहा है? Easy traffic from the other states. So traveling has now become seamless after the removal of toll tax booth at Lakhanpur. जब enter करते तो this was there. Taking permission is not required anymore. Apart from this, the removal of toll tax from the airport, railway stations, and all the checkposts has helped in smoothing the interstate business. So this has definitely helped in movement of traffic. Then tradition of 2 offices comes to an end. So with this change, rupees 200 crore has been saved, and the pressure on the security forces has also been eased. The Secretariat of Jammu and Kashmir will be open throughout the year, and all the government works will be done smoothly. अब सारा काम UT के अंदर तो एक secretariat से हो जाएगा. Then rehabilitation of migrants and refugees. So government jobs for 3,000 Kashmiri migrants. 739 migrants have been appointed under the PMDP, Pradhan Mantri Development Program 2015. And another group of migrants have been selected. Further, construction of transit homes for migrants have been completed by 2022. Some 36,000 refugees from the park occupied J&K, POK basically. Then हम उसको आजकल ऑफिशियल डिक्शनरी में ना POK नहीं बोलते, POJK बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच आर ऑक्युपाइड, तो वो सिर्फ कश्मीर पे ना सीमित रहे। Then Chhamb and Niyabat, ये पर्टिकुलर एरिया के रेफ्यूजीज के लिए क्या किया देखिए, 5.5 लाख पर फैमिली एज वन टाइम फाइनेंशियल एड को दे दिया गया कि भाई अपना अपना कोई कारोबार शुरू कर लो, यहाँ के सेटलमेंट के लिए जगह दे दी। Then 5,300 families who had left J&K earlier have returned, have also been identified for similar financial aid.
financial aid for Indian government for refugees from Western Pakistan in the amount of 5.5 lakh per family was given to, again, some 5,700 families. So here, this is basically rehabilitation of refugees. तो रेफ्यूजी इशू जब भी आए तो उसमें ये वाला आपने डालने की कोशिश करनी डेटा. ओके, मूविंग. लद्दाख. नाउ JNK खत्म, लद्दाख कर रही है. So Ladakh was behind the developmental race because of social structure and discrimination from the state governments. But after the abolition of Article 370, it was declared as a UT. So अब central government खुद उसके development का ध्यान रखेगी. Now Ladakh is heading for path of success with special support of central government. So there is a Prime Minister developmental package which has been announced for both JNK and Ladakh. So यहाँ पे भी उसी तरह से projects, investment projects are started. So just remember this much: it's investment projects. So some 8 projects are there in Ladakh UT. Increased disbursement in budget. So about 5,958 crore rupees per year extra disbursement. Next, कौन से development projects हैं? So Sindhu Infrastructure Development Project, establishment of a central university in Ladakh, work in progress for Ladakh University, new degree colleges, and new airport terminal at Leh and district hospital in Kargil. Then ICT labs and smart classrooms 91 schools के अंदर शुरू कर रहे हैं. उसमें से जो भी याद रह जाए, it's like this. At least you should try and remember this too. Top 2. Okay. Construction of a multi-purpose indoor stadium and ice hockey rink, mini hydro project, 550 megawatt. Then solar power energy projects at Phoenix, Leh. Electric transmission lines, बहुत मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस को लेके, क्योंकि माउंटेन एरियाज में ट्रांसमिशन लाइन लगाना बहुत मुसीबत का काम है. हेल्थ फैसिलिटीज, सो मोर हॉस्पिटल्स, मोर बेड्स आर बीइंग क्रिएटेड. ICWMP, so work on integrated solid waste management plant that was completed because जैसे जैसे ये नीति आयोग के स्पेलिंग गलत है, गवर्नमेंट ही बताओ गलत डाल रहे स्पेलिंग, क्या करें. ठीक है. So anyhow, so this was required because hilly areas में this becomes a major problem. Otherwise, dumping sites will be there. जैसे आप tourist destinations में देखते हैं. Then Srinagar Leh Rajmarg, so national highway के अंदर Zozila Canal work is in progress. Helipads and hangars are being constructed. Road construction, Sowa Rigpa institutions. So ये भी एक traditional medicine का mode है. Sowa Rigpa याद रख सकते हो. Then cold storage facilities have been created in Leh. Ladakh greenhouse project with 100 polycarbonate greenhouses were established. ये vegetable cultivation के लिए, horticulture के लिए अच्छा होता है. Then job opportunities for 5 new tourist circuits and 5 new trekking routes. Snow clearance machinery that has been put in place. So all this for Ladakh. These are all the initiatives, so to speak. So आपके पूछेंगे ना अगर कभी भी security के अंदर तो initiatives पूछते हैं. What government initiatives have been done to deal with the situation? So these are the initiatives. अभी JNK लद्दाख है, जब साइबर सिक्योरिटी ये सब आएगा तो उसमें भी इनिशिएटिव्स वहीं आ जाएंगे. ठीक है. Now नॉर्थ ईस्ट ऑन द रोड ऑफ प्रोग्रेस. नॉर्थ ईस्ट में ना बेसिक सा ट्रबल क्या है पहले थोड़ा समझ लेते हैं. नॉर्थ ईस्ट इज अ ट्राइबल जोन. नाउ ever since the Britishers occupied it, they tried to lure people, lot of people into Christianity. Because of that, many of the tribals, they feared that their ancient tradition that is under threat by the invaders coming from the plains. तो वो ब्रिटिशर्स के टाइम से सबको इन्वेडर ही समझते हैं उस लेवल पे. तो ये इट क्रिएट्स अ चैलेंज टू देयर ट्रेडिशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जितने भी ट्राइब्स होते हैं, दे आर अ क्लोज्ड सोसाइटी. दे वांट टू बी क्लोज्ड बिकॉज they don't identify with anybody coming from outside. So herein, when there is a racial admixture taking place because of migrants from here and there, maybe plainer areas, maybe refugees, maybe whatever, so that creates another sense of trouble there. Because for political rights, job and opportunities, वो सारों के अंदर challenge create होता है. ठीक है. तो ये दो main concerns हैं, tradition and closed society. A challenge to tradition because of coming up of various religions and so on, and the admixture that has been created. Okay.
The development of Northeast region has come to halt after independence due to decades of apathy. पहले तो ध्यान ही नहीं दिया. Northeastern region got disconnected from the mainstream development due to the separatist movements. At this state, a dedicated policy to connect Northeast region with the mainstream development and end violence and separatism was needed, and to strengthen the feeling of unity in the country. नॉर्थ ईस्ट के लिए ना आउटरीच इनिशिएटिव कुछ खास लिया नहीं गया, एक लुक ईस्ट पॉलिसी आया था बस, उसमें भी हम थोड़ा बहुत ही काम कर पाए. एशियन सार्क, तो लेस वाज अचीव्ड, मोर वाज टॉक्ड अबाउट, ऐसा रहा हमेशा. अभी स्ट्रेटजी है क्या? अभी आपसे अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चंस में यही पूछा गया कि भाई व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी अडॉप्टेड टू डील विद एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, ये सब. तो स्ट्रेटजी सब में यही है जो यहाँ पे अब देख रहे हो आप. So just after swearing in, the Prime Minister of India in 2014 gave a far-sighted and clear vision on the Act East policy. This was the central government's policy for overall development of the Northeast region. The first is establishment of peace and stability after ending disputes, one. Then development through Northeastern cultural promotion, two. अब यहाँ पे भी अगर आप ये सेम स्ट्रैटेजी को छत्तीसगढ़ में अप्लाई करना चाहते हो तो जस्ट पुट नॉर्थ ईस्टर्न की जगह कल्चरल प्रमोशन, ठीक है. देन यूनिटी विद द कंट्री विद स्पीडी डेवलपमेंट. तो ये सारा एक जैसी ही प्रॉब्लम्स है सब जगह. तो थ्री फोल्ड तो ये हो गया, ठीक है. ओके, नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी? So progress of Northeast. So it is due to the focused and right policy that since 2014 peace prevails in Northeastern region. हालांकि फिलहाल की स्थिति अगर देखेंगे तो ज्यादा पीसफुल नहीं है. Separatist organizations are also becoming a part of mainstream. Border conflicts between the states are being resolved. अब क्योंकि ये अगर देखा जाए तो 3 अप्रैल का डॉक्यूमेंट है, जो मई में वायलेंस हुई मणिपुर के अंदर, वो इसमें नहीं आ रही, बाकी सब तो आ रहा है. तो आप थोड़ा बहुत वो वायलेंस वाला फेज अगर छोड़ दें हाईकोर्ट की वर्डिक्ट के बाद जो क्लैशेस हो रहे हैं, अदरवाइज दिस डॉक्यूमेंट इज मच मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ व्हाट इज द ग्राउंड सिचुएशन. So unrest is diminishing. Northeastern states are once again moving rapidly towards becoming Ashta Lakshmi. So 8 sisters and उस हिसाब से देख रहे हैं कि सारे ही progressive. Then keen eye policy assured security. So in the last 8 years, the central government has released 2,000 crore rupees for rehabilitation of terrorists who have surrendered as a part of mainstream society and for different security purposes in Northeastern region. So since 2014 till now, 6,000 terrorists almost have surrendered. तो surrender करने पे जब अपनी बंदूक कुछ भी जमा कराते हैं, फिर इनको कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ एक लोन मिल जाता है ताकि ये अपना दोबारा से जिंदगी शुरू कर सकें. Drastic reduction in violence after 2014, but in the May 2023, lot more violence has happened. जितना शायद इधर इतने इंसिडेंट्स नहीं हुए थे, वो सिर्फ मई में हो गए, तो उसका भी अभी रिकॉग्निशंस लेते हैं. So there is in general reduction in violence. So 60% is an average figure that you can take up. ठीक है, 2014 onwards इतना फर्क पड़ा है. Now Modi government is proceeding by giving priority to 3 things in northeastern area. First is to cherish the culture, basically dance, music, language, and culture. Then to make Northeast peaceful by resolving all disputes, and to make it a developed area and bring back its contribution to GDP as it was before the independence. So 3 things: development, peace, and culture. ये 3 चीजें Northeast में स्लोगन, ठीक है. Now agreements opened the door to solutions. So अलग-अलग ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ अलग-अलग एग्रीमेंट्स हुए हैं. जैसे असम के अंदर बोडोलैंड की डिमांड पहले, अब वो बोडोलैंड अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के लिए बोडोस डिमांड कर रहे थे, तो देयर वाज एन एग्रीमेंट विद द बोडोस. सो ऑन 27 Jan 2020, Honorable Home Minister had agreement on the Bodo issue that was pending for years, was done between the Indian government, Assam government, and the leaders of the Bodo community. So that is the Bodo agreement. ठीक है, अभी इसके तहत करेंगे क्या? After the provisions of a special development package of rupees 1,500 crore, 1615 workers from the National Democratic Federation for Bodoland (NDFB) surrendered and joined the mainstream as a result of the dispute was resolved. Essentially, today
in the name of socio-cultural, what is actually demanded is economic and political. That is what is happening in Northeast. बात करेंगे social cultural, demand करेंगे political economic. Political economic means we should be given more representation, we should be given more economic endowments, one or the other. बस उस पे आके एडजस्टमेंट हो जाए. सोशो कल्चरल अब धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है कि यार अब ये जितने बंदे खड़े हैं बोडोलैंड वाले, कौन सा बंदा है जो ट्रेडिशनल ड्रेस में, बोडोस की ट्रेडिशनल ड्रेस देखते हैं जरा कैसे लगते हैं बोडोस. हैव अ लुक. दुखना बोलते हैं, देखना किसने पहना हुआ है. दिस इज दुखना. फॉर द मेन इट्स इवन मोर like this. So this is bodos. If I just take up men, here it is. How many of these look like bodos? None. And they don't even want to look like them. Only from time to time, traditionally, when they have some function or something like that, then these things will come up. Otherwise, mainstream. Everyone now wants to go mainstream. LPG, liberalization, privatization, globalization, centered everywhere. If you have a phone today and you are connected to the internet, the aspirations are definitely changing there. Yes. Next one, ब्रू एग्रीमेंट. सो बड़ू रियांग ये भी एक कम्युनिटी है, तो इसके अंदर भी यही एग्रीमेंट्स किए गए. दे आल्सो आर अ माइग्रेंट कम्युनिटी. लेट्स सी. So in presence of Honorable Home Minister, the Indian government, Tripura government and the Mizoram government signed the agreement with the representatives of the Bru Riang on 16 January 2020 for the permanent domicile of Bru migrants. So Tripura और Mizoram के अंदर Bru का issue चलता था. The rehabilitation issue of some 7,000 Bru families at Tripura was resolved with the provision of around 661 crore rupees financial help package. Just about money again. अब अगर देखो 7,000 के करीब फैमिलीज हैं और 700 करोड़ रुपए के आसपास पैसा दे दिया, तो सबके पास सफिशिएंट चला गया. अभी आराम से रिहैबिलिटेशन हो सकता है. देन एग्रीमेंट ऑन सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस बिटवीन यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट एंड कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मणिपुर. लेकिन ये सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट था, ये अभी मई में दिस हैज बीन डिसरप्टेड. So May 2023, this has been disrupted. आज के ही न्यूज़पेपर के अंदर इनफैक्ट, ठीक है, दोबारा से फिर वायलेंस ब्रेकआउट कर रहा था. Then Karbi agreement. So 1,000 armed cadre joined the mainstream, leaving behind the path of violence in 4 September 2021. So Karbi Anglong district is there. उधर ये इशू चलता है. Then there is NLFT. So this is National Liberation Front of Tripura. So they have also made an agreement in 2019. आपको तो सिर्फ इनमें से ना इनके आउटफिट्स के नाम याद रखने हैं. नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन आएगा तो कंबाइंड आएगा. Then United Liberation Front of Assam, ULFA, and the Karbi Longri NC Hill Liberation Front. So they signed a suspension of operation agreement with Government of India. Then interstate border agreement with the Assam and Meghalaya. तो यहाँ पे कुछ border area disputes थे कि कौन सा area कौन सा state में जाना चाहिए. So out of 12, dispute of 6 areas was resolved. So this is the situation in Northeast. बहुत सारे agreement sign कर लिए. इन organization का नाम जो है वो means के लिए याद रखना. The tough task will be that. ठीक है. So you should try and make a table like this: organization and area or state. फिर आपको याद करना थोड़ा आसान रहेगा. Then from insecurity to aspiration. So generally what has been happening in this area is because of some or the other extremist activity going on, there was a general environment of insecurity, but now we are becoming more and more aspirational. Let's see how. Okay. This is better in terms of visibility. First is the area of AFSPA was reduced and people felt secure. AFSPA is Armed Forces Special Powers Act. Essentially जो हमारा आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट है ना, वो हमारी फोर्सेस को अलाउ करता है बॉर्डर्स पे ऑपरेट करने के लिए. जो लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट है उसको मैनेज करने के लिए पुलिस एक्ट है और पुलिस का काम है.
अगर डिफेंस फोर्सेस को सिविलियन एरियाज में ऑपरेट करना हो तो उसके लिए एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्रिएट किया गया, दैट वाज द आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। सो अब इसको रीजनली डिस्ट्रिक्ट वाइज कहीं पे भी जहां पे भी लगता है कि देयर इज अ डिस्टर्ब्ड एरिया, फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर AFSPA in particular area, it has to be declared as a disturbed area by Ministry of Home Affairs. तो वो disturbed area पूरा state भी हो सकता है, district भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। Accordingly इसको लगाते हैं। Now the efforts made to bring peace in northeastern region have reduced in the reduction of the disturbed areas that were under the Armed Forces Special Powers Act. Instead of feeling insecure, people in that area are now filled with aspiration. So in Assam, 60% of Assam land is now free from AFSPA. Imagine, अभी भी 40% Assam AFSPA के अंदर है, इसका ये भी मतलब है। So in Manipur, 15 police stations of 6 districts are now out of disturbed area. Arunachal Pradesh, it's now only in 3 districts. Nagaland, the notification of disturbed area has been removed from a lot of districts, 7 districts. Then Tripura and Meghalaya, AFSPA has been removed from both states completely. So basically जो complete removal है वो तो 2 ही states में हुआ है अभी, त्रिपुरा एंड मेघालय। बाकी states में अभी भी चल रहा है, 30-40% चल रहा है, लेकिन उतना भी बहुत होता है। Then northeast on the track of development, so what we have tried to do there. So northeast could not progress because of troubles, insecurity and hurdles. After 2014, so Prime Minister started with the Look East policy, has once again brought northeast on track of progress. Like I was telling you कि बांग्लादेश, म्यांमार, इन सबके साथ हमारे कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ा रहे हैं। So 110% growth in budget, first off, in terms of allocation to the states. Then NEC allotment. So 30% of the NEC allotment was allocated to the deprived areas and ignored sections. So northeast communities जितनी भी हैं, उनकी allotment बढ़ाई गई. Then Prime Minister's divine. So what is this? So with the primary allotment of rupees 1,500 crore in the budget, a new policy was initiated for the northeast. So what is this divine? Let's see. PM divine scheme. So development initiative for northeast. करना क्या है? Fund the infrastructure and need-based social development, including one of the kind bamboo link road project. So that is what was started. ऐसे छोटा सा कोई करंट अफेयर देखना हो ना तो ये सबसे बढ़िया जीके टुडे, बड़ी पुरानी वेबसाइट है। तो डिवाइन स्कीम, मुद्दे की बात करते हैं, बिल्कुल फालतू पैडिंग नहीं करते। The scheme aims to fund the infrastructure on the need-based social development, including one of a kind bamboo link roads in Mizoram. Bamboo link roads have been constructed in Mizoram. तो इसमें करेंगे क्या? Will be transporting bamboo from the forest, and it will also help in the management of pediatric and adult hematolymphoid, that is head and neck cancers in the northeast region. आमतौर पे ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, कारण है उसका। जब हम बैम्बू को बर्न करते हैं किसी भी फॉर्मेट में, तो उसमें एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है आर्सेनिक एंड देयर इज अनदर वन, लेड। इन दोनों के ऑक्साइड्स बनते हैं जो कि बैम्बू के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। इन दोनों के ऑक्साइड बनते हैं जब उसको बर्न किया जाता है, और ये दोनों ये कैंसरस हैं जब भी आप इनको एक्सपोजर होगा, स्पेशली हेड एंड नेक। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, हेड एंड नेक को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो यू नीड टू स्टॉप बर्निंग बैम्बू whatever way it is. अगर आप अगरबत्ती भी जला रहे हो तो make sure कि it is the stick used is not bamboo, especially if it is indoor. Okay. In none of the Hindu dharm granth or anywhere bamboo is supposed to be burnt. In fact, mango wood or even sandalwood भी burn नहीं करते, rub करते हैं. Mango wood is generally something which is burned. Okay. Next. मिजोरम का क्या फायदा होगा? सो पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैम्बू लिंक रोड, दैट इज देयर, तो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऐजवाल बाईपास, देन व्हाट एल्स? द पीएम डिवाइन स्कीम विल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन लाइन विद द पीएम गति शक्ति एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सो फंडिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फेल्ट नीड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो अभी ये फेल्ट नीड्स जब बोलते हैं ना तो मतलब डिस्क्रिशनरी है, क्या फंडिंग करेंगे, किस पे खर्च करेंगे। नेक्स्ट,
नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो हमारे बजट के अंदर एक प्रपोजल था कि जो लेस कनेक्टेड एरिया है उधर एक रोपवे डेवलप करेंगे. So here was somewhere 6 ropeways of 60 kilometer under Parvatmala in PPP project will be there for connections with the other states. Then strengthening the foundation. So a lot of rupees were spent upon the development of Northeast region. Then growth in the budget of the donor ministry. Donor ministry is Ministry for Development of Northeast region only. So यहाँ पे 65% growth has happened in this budget. Then Northeast Council budget has been increased. So 14 Finance Commission, the budget was increased by 1.5 times. So पूरा Northeast state का budget बढ़ गया है जो Finance Commission के through जाना होता. National Edible Oil Mission, so smoothened with palm oil and National Cane Mission, organic farming, etc. So all this has been sanctioned. Identification of backward blocks. तो आमतौर पे जिनकी Human Development Index के अंदर काफी नीचे है ranking, उनको backward blocks बोलते हैं या aspirational districts बोलते हैं. So 40 backward blocks from 20 districts were identified in all states of Northeast. So they will be now taken care of in terms of development. So all these are used in what the government is trying to do in terms of initiatives for development in the Northeast region. Then transportation becomes easier and distance lessened. तो जो tunnels बन रहे हैं उसके through बहुत फायदा हो रहा है. So road connectivity has been boosted, soaring progress under Udan scheme and Bharatmala project. So about 5,200 kilometers of road construction has happened. Projects proposed. Speed of railways has been enhanced. So Jiribam Imphal new line project has been started, and more of Agartala and Akhora rail link is in progress. बांग्लादेश के साथ जो हम कनेक्ट कर रहे थे कल हमने इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में भी बढ़ा. Now aerospace industry in Northeast, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है तो हेलीकॉप्टर्स एंड एरोस्पेस कैन बी द नेक्स्ट स्टेप टू अचीव बेटर कनेक्टिविटी. So here what we have established is अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने एस्टैब्लिश किया था नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इन शिलोंग विद स्पेस डिपार्टमेंट सन 2000 के अंदर. अभी रिसेंटली दिस इज बीइंग गाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आफ्टर 2014 टू अचीव न्यू डायमेंशंस. क्या क्या है इसको लेके? Construction and revival of 3,000 ponds in the area has been planned, and this is helpful in flood planning in Assam. Then to diminish the risk in terms of disaster management, so single window disaster management system has been created. Soil resource mapping has been prepared. E-Atlas prepared by NESAC. So E-Atlas के थ्रू हम मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड इनकी मैपिंग स्ट्रॉन्ग किया है, इलेक्शंस में यूजफुल है. Then for continuous vigilance, NECAC has prepared an unmanned aerial vehicle to use for medicine, food, and relief during a disaster. So this is another good initiative in entire Northeast. Then decisive battle with left-wing extremism, rise of peace, stability, and development. So left-wing extremism का क्या situation है? For the last 4 decades, left-wing extremism has become a challenge to democracy. Not only development was stalled, but about 16,652 security personnel and citizens lost their lives too. There is no place for troubles, insecurity, and hurdles in India. Proceeding with new resolutions, new targets, and a new vision towards self-reliance. So Home Ministry has made a 3-dimensional strategy to abolish left-wing extremism to ensure peace, security, and prosperity. अभी आपसे यही पूछा गया था कि भाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से डील करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए, तो आपने भी बस इसी की बात करनी, peace, security, and prosperity. Okay. So first is control extremists with a better strategy, then better center-state coordination and public contribution to development. 3 level पे काम कर रहे हैं. Let's see. Fourth, what is the effect of this? Great downfall in violent acts and area limit of the left militants in India. So the 3-dimensional strategy, we have successfully been able to coordinate to reduce the area in which it was there. नहीं तो ऐसे बोलते थे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा जो ईस्टर्न हाफ ऑफ इंडिया है, इट इज मार्ड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. रेड कॉरिडोर बोलते थे. Maybe you've seen a map for a red corridor. So
LWE, if you search LWE Red Corridor. So this entire area, right up till Telangana, was considered to be the red footprint or left-wing extremism footprint. Yeah. Now, reduction in terms of violent acts, deaths, death of security forces and surrender of militants has increased. So general data है, याद रखना मुश्किल है, but you can say 60%, 70% reduction. ये इसके आसपास घूम रहा है. Strategy क्या है? First is expansion of security range and decrease in militant affected areas. So from 2019 till now, 108 camps have been made in extremist affected areas. So security forces अपने camps establish कर रही हैं जाके. Relocation of camps from time to time after security assessment. 4 new joint task force were established. So CRPF battalions were redeployed. 6 battalions of Central Reserve Force were deputed in militant affected areas. Then attack strategy changed the scenario. So instead of applying security policy against the militants, attacking policy was applied. पहले डिफेंसिव था कि कोई बात नहीं, इनसे सरेंडर लो, कुछ करने की कोशिश करो, ट्राई टू रिहैबिलिटेट देम, व्हाटएवर. बट अब उसका टाइमलाइन खत्म कर दिया, अब तो ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी, ढूंढो और मारो बस. लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है. ऑल दीज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, दे आर आल्सो सिटीजंस ऑफ इंडिया. प्रॉब्लम इज दिस. तो वो फिर वो केपीएस गिल वाला आइडियोलॉजी हो जाता है कि आटे नाल को पिसता है, यू नो, विद द व्हीट सम हस्क will also be graded out and churned out in the process. तो ये प्रॉब्लम होता है. अच्छे बुरे एलिमेंट्स दोनों ही मारे जाएंगे. To seize the militants, innovative methods of security were implemented. Combined campaign of 13 days organized from in February 2022 in Lohardaga district of Jharkhand achieved success. So Operation Green Hunt एक चलता है इंडिया में. If you have heard of this. और आज से नहीं है, ये सन 2005 से चल रहा है ऑपरेशन ग्रीन हंट टू कंट्रोल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज. सो ऑल फॉर्म्स ऑफ नक्सलाइट, बी इट विद अ गन और पेन, हैज टू बी eradicated. This is a very stern statement. Naxalites with pen means those who are just supporting the leftist sentiment to an extent, but this is extreme left. Extreme left means those who are ready to take up guns or violence against the state. Then watch for surveillance on funding of extremism. So property worth rupees 22 crore has seized by the states, property worth rupees 3 crore by the ED and worth rupees 5 crore by the NIA by launching an intensive surveillance operation. Basically पैसे के बिना तो कोई भी आंदोलन नहीं चलता ना, तो उसके वो ट्रैक करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं. And speedy investigation by NIA. So a separate division has created in the NIA to speed up investigation in the left-wing militants. Till now, there have been 55 cases of investigation. And special teams ready for special operations. So guerrilla warfare basically is something that is done in this area. And for that, the teams are being trained by the army, by BSF, by the others, Assam Rifles, and everybody operating in this area. Importance to technique and strong security strategy. So with the use of latest technology, mobile location, call description, social media tracking is done, and a strong system is ready for the use of analysis and forensic institutions. एक ही चीज की अभी थोड़ा सा कभी-कभी लिमिटेशन आती है, कोऑर्डिनेशन. और वो दो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है. एक तो आर्म्ड फोर्सेस और दूसरा पुलिस. एट द फ्रंट लाइन, एट द बैक एंड जो कोऑर्डिनेशन मिसिंग होती है, तो दैट इज बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन द स्टेट एंड एट द सेंटर. क्योंकि ये सेंटर के लेवल पे ऑपरेट करेंगी और ये स्टेट के लेवल पे ऑपरेट करेंगे, पुलिस जितनी भी है. तो ये थोड़ा कोऑर्डिनेशन ट्रबल है. अदरवाइज हमारे पास सिस्टम है टू डील विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म टू एन एक्सटेंट की अब उनको जब भी करेंगे तो अटैक इस तरह से करना पड़ेगा दैट दीज शुड हैव सिमिलर अमाउंट ऑफ कैजुअलिटीज. आईईडी ब्लास्ट में तो कुछ कर नहीं सकते, उसमें कहीं ना कहीं ट्रबल रहता है, लेकिन बाकी केसेस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी. देन हेल्प थ्रू एयरवेज इज नाउ पॉसिबल.
So helicopters have been deputed for help and rescue during the operations in the left-wing extremist affected areas. 14 pilots, 3 engineers have been posted in the last year. Special amount was provided to CRPF to make night landing helipads. So Air Force के साथ collaborate करके अभी operations चल रहे हैं, combing operations. Better center-state coordination. So to abolish LWE from the root, central government has worked with the affected states continuously, ignoring its political interests and opinions. Keeping politics aside, it has continuously tried to be successful in the goals central government has provided to affected state in terms of armed police forces, helicopters, training, finance for modernization of state police, devices and arms, intelligence reports, and construction of fortified police stations. This all has helped in dealing with the security situation. Now, the Indian government has provided finance under security related expenditure and special infrastructure scheme to the affected areas. So, ये दो schemes का नाम याद रखना है. Then, in the last 3 years, the central government has spent about 1,000 crore rupees under the security related expenditure in affected areas. In the last 8 years, there is a rise of about 104% in the amount given to the states under the scheme. For the operations in the affected area, to strengthen special forces and special intelligence bureau, the project has been created, SIS. Then in the left-wing extremist affected area, 250 fortified police stations have been created. Then help plans for central agencies, ये भी शुरू किया. So that is under LWE. Because we're living in peaceful states like Punjab, Haryana, Delhi, Maharashtra, western states mostly. So at least my students are mostly from the western state. If I cut India into half, only few from some states like UP, Uttarakhand and so on. तो बहुत हमें इन चीजों के बारे में ना इतनी नॉलेज ही नहीं है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में क्या हो रहा है. अगर डीप वहां पे आप कभी घूमने भी जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में यहाँ पे LWE का इम्पैक्ट है. Those who have served there, those who have been in this areas, they know it definitely. Okay. Now, next is public contribution to development. Like I said, so पहले इसको double-edged sword strategy बोलते थे. एक तरफ तो आप डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो और दूसरी तरफ सिक्योरिटी के ऊपर. एंड सिक्योरिटी सिचुएशन इज टू बी डेल्ट विद स्टर्नली, और दूसरी तरफ डेवलपमेंट. दोनों पे साथ साथ काम करके ही बात बनती है. So LWE militants took shelter in some of the very backward and poverty-stricken areas of the country, and the militants had manipulated the people who were deprived of basic facilities like even water, sanitation, like this, and had distrust and dissatisfaction. आमतौर पे जो गरीब लाचार हैं जिनको स्टेट से आज तक कुछ मिला नहीं, उनको बहुत अच्छे से भरमाया जा सकता है एजेंडा को लेके. These extremists used people's disaffection as a shield to fulfill their interest. But after 2014, when the government changed its policies and changed the way to decide the matter related to this problem, now the situation is changing for better. Now, today, the area under LWE is reducing. There are a lot of development projects that are taking place, and people have started showing interest and trust in the government and the system. आप imagine करेंगे कि अगर 100 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, in that area there is no hospital, police station, any kind of government office, any kind of electricity, any kind of water, any kind of sanitation, anything that you know that is a reminder of a civilized world. No education institutions, nothing, just forest. People are living there, they are proper cities, roads are there to an extent, small or big, but none of the basic facilities have been given. And this is in, ऐसा नहीं है कि like 10-15% of state है. This is in like 50 to 60% of the state edifice. ये हालत है कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर. तो फिर वहां पे नक्सलिज्म को बढ़ने में अपने आप हेल्प मिलेगा, इसमें किसी की तो कोई गलती नहीं. और ये आज से नहीं हो रहा है. अगर आप थोड़ा याद करो तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1965 में, तब भी वो वेस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, इनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहा क्योंकि वहां पे अश्योर्ड इरिगेशन ऑलरेडी था. इन स्टेट्स में नहीं था. तो बाद में 90s में जाके ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न रीजन, इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू हो रहे थे. ईस्टर्न इंडिया में भाई इसको कुछ कोशिश करें लाने की. So this is the area which is ignored
not now, but right from the even during the British period, if you remember, this was called as Northern Sirkars. एक कुछ एरिया हैदराबाद के निजाम के अंडर होता था, कुछ सरकार नॉर्दर्न सरकार के अंडर होता था, कुछ बंगाल के अधीन होता था, जो अर्स्टवाइल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल थी. तो कुछ खास इसमें डेवलपमेंट हो नहीं पाई. Sir, even in Punjab also in 1965, the big farmers who were landlords, they were benefited. So nationalism यहाँ भी आया था, लेकिन हमारे यहाँ पे आने का कारण डिफरेंट था. हमारे यहाँ पे तो बॉर्डर स्टेट होने की वजह से जब भी कभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जैसी सिचुएशन आती है, तो दैट इज पर्कुलेटेड डाउन फ्रॉम पाकिस्तान. इट इज ऑलवेज लिंक्ड फ्रॉम जो ISI है. इट इज नेवर दैट कि पंजाबी पीपल आर ब्रिंगिंग दी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. पंजाबी पीपल की आपने एक ही मूवमेंट देखी है, वो है फार्मर आंदोलन. दिल से देखिए ना, तो जहां पे फिर हर फैमिली में से लोग जाएंगे कंट्रीब्यूट करने के लिए. दैट इज द वन मूवमेंट इन विच इंटायर पंजाब एक्चुअली पार्टिसिपेट. Prior to that, whatever movements have happened in the name of Khalistan, left-wing extremism, whatever, they have always been mitigated, initiated, are orchestrated by ISI, Inter-Services Intelligence Group of Pakistan, never by the Punjabis in particular. Numbers ही नहीं थे उनके पास, अब भी नहीं, इसीलिए तो नहीं कर पा रहे. तो लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है. जहां पे ये सारी चीजें ही नहीं है, उधर किसी को भड़काना बड़ा आसान. पंजाब में तो ये सबसे पहले ये सारी चीजें थी ही ना. Never this was a trouble. Okay. Then gaining public trust through access to development. So in the last 8 years, a lot of roads have been constructed. Then postal department has opened post offices in 90 districts that were affected by LWE. Imagine post office नहीं होता था, अब तो बन रहे. Then in the 30 most affected districts, 1253 new branches of banks and 1264 ATMs have been opened. कहने का मतलब कुल मिला के बैंक के अंदर ही ATM है, 10 के ATM ही है जो बाहर है. ठीक है. Then to make communication facilities public friendly, so now mobile towers are being erected. नहीं तो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन नहीं चलता था बहुत अच्छे से. जितने मेरे बेचारे IAS वाले स्टूडेंट को अगर कहीं झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर उड़ीसा पोस्टिंग मिल जाती ना, रोते ही रहते थे. 10-10 साल तक रोते दिखा उनको मैंने. उसके बाद कहीं और स्टेट में अगर ट्रांसफर ले पाते शादी के बेसिस पे या कुछ भी, फिर जाके उनको सांस आते, क्योंकि आदत नहीं होती. अब स्पेशली पंजाबीज, दे आर ऑलवेज वांटिंग सच काइंड ऑफ लग्जरीज इन लाइफ. चाहे सैलरी कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो फॉर देम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन वेयर देयर इज नो टेलीकम्युनिकेशन, नो बैंकिंग फैसिलिटीज, नो नथिंग कॉल्ड एज लग्जरी ऑफ लाइफ, नथिंग लाइक दैट. सिर्फ कैपिटल में थोड़ा बहुत मिलेगा, और कैपिटल में हमेशा प्लेसमेंट आएगी ऐसी तो जरूरत है नहीं. रिमोट एरियाज में भी बहुत आती है. देन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, so that means residential schools. So in militancy affected areas or tribal areas, these were approved to strengthen the primary education. So 63 schools have been coming operation. 234 शुरू करने थे, अभी सिर्फ 63 हो पाए. 63 स्कूल्स ना, जिस शहर में भी आप हो उससे ज्यादा स्कूल्स आपके शहर में होंगे. यहाँ पे हम पूरे LWE अफेक्टेड एरिया की बात कर रहे हैं. ठीक है. Then in 47 districts affected by extremism, 47 ITIs, Industrial Training Institutes, and 68 skill development centers were approved. अभी अप्रूव हुए हैं, out of which 30 ITIs and 61 SDGs are ready. So again, अब जाके हम ये चीजें वहां पे शुरू कर रहे हैं. With the purpose of building trust and affinity with security forces, civic action program was implemented for the locals. Then from May 2014 till date, armed paramilitary forces have spent about 140 crore rupees on health camps, drinking water, solar light, distribution of medicine, skill development, agricultural equipment, seeds to the local people successfully. And to connect youths and technology, new experience of progress, sum of rupees 20.5 crore have been spent. So क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ताकि
जो ट्राइबल यूथ है, they can come and study in the major educational institutions, be a part of technology giants whenever possible. Okay. So this is with respect to left-wing extremism. What all initiatives have been taken recently and since 2014? क्योंकि बेसिक आर्किटेक्चर आई बिलीव आपको सबको मालूम है, और जो मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं उसके अंदर सारा बेसिक आर्किटेक्चर ही डिस्कस्ड है क्वेश्चन आंसर्स के अंदर, तो वो नेक्स्ट क्लास में उनको भी नजर मार लेंगे। तब तक ये करंट एस्पेक्ट्स जिन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है वो देख लें। नेक्स्ट इज ड्रग फ्री इंडिया। उड़ता पंजाब मूवी याद आ जाती है। तो चलिए, ड्रग ट्रेड इज नॉट अ प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय इंडिया बट इज अफेक्टिंग द इंटायर वर्ल्ड। इंडिया में ना हम अभी भी इनको इलीगल लेके चल रहे हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। बहुत सारी कंट्रीज में तो जैसे स्टेट वाइज या कंट्री वाइज उसको लीगलाइज कर दिया गया, कैनबिस, ओपीएम एंड सो ऑन, because it's very difficult, and what it leads to is cartelization, drug trafficking, crime and everything like that. If you make it legal and it's available to be sold off the counter, बंदा जाए अपने पैसे दे खरीद ले, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो वो जो ड्रग कार्टेल्स, ट्रैफिकिंग और उसके साथ जुड़ा हुआ पूरा क्राइम नेटवर्क है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑफ द काउंटर कहीं से भी जाए खरीद लो। जब अब फिर इस तरह से होगा तो जो स्पूरियस ड्रग्स बीच में बिक्री होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे फिर एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर जाते हैं जो भी, तो वो खत्म हो जाता है। फिर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है कि भाई तेरे बॉडी वेट के हिसाब से तुम कितनी कंज्यूम कर सकते हो, वो मिल जाता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप एक कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। दोज हु नीड should have access, those who don't need they shouldn't, simple, so according, moreover गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू बनता है इन सब चीजों के अंदर। तो इसलिए बहुत सारे स्टेट्स ने आज की डेट में ये देख लिया कि हम जो ये ड्रग ट्रेड है इसको कंट्रोल करने की बजाय या इसको एक इलीगल एक्टिविटी बनाने की बजाय लीगलाइज करें और इसको रेगुलेट करने की कोशिश करें। दैट्स व्हाट इज नाउ गोइंग ऑन वर्ल्ड वाइड। अब इस ट्रेंड पे आना शुरू हो गए इंडिया में, लेकिन अभी भी इसको हम ठीक तरह से पकड़ नहीं पा रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान है, राजस्थान के अंदर ओपीएम is sold. Opiates are also sold in various forms like husk and whatever forms. लेकिन पंजाब के अंदर बैंड है, तो फिर राजस्थान से पंजाब में स्मगलिंग होती है। क्या आइडिया? पंजाब और राजस्थान के लोग तो एक जैसे ही है ना, तो जिनको खरीदना है वो खरीदेंगे भी, कंज्यूम भी करेंगे, एंड इट इज गोइंग टू गो ऑन। सो व्हाई क्रिएट सच काइंड ऑफ legal architectures which are not enforceable and also create various troubles like crime? So now addiction makes youth a burden on the society, and its trade encourages crime and terrorism. Modi government considers addiction a big challenge. In fact, चाइना के अंदर जो ओपीएम वॉर्स हुई थी वो भी इसी के बेसिस पे थी, क्योंकि बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो उन्होंने ये शुरू किया था कि ओपीएम के बदले में चीजें ले आते थे, और जो पूरी चाइनीज पॉपुलेशन थी ट्रेडिंग पोर्ट्स के नजदीक, वो बेकार होती चली जा रही थी। देयर यूथ वाज फिनिश्ड। In the 75th year of independence, Amit Shah decided that the Prime Minister's call for drug-free India should be a resolve to be met in the Amrit Kal, that means 100 years of independence, जो अगले 25 साल हैं उसमें करेंगे। Following his thought, the Home Ministry developed a three-dimensional zero-tolerance strategy on drugs. What all is happening? What strategy can be taken for drug control or menace of drug? So उसको लेके आपने भी यही strategy याद करनी। First is coordination among organizations, strong organization structure and awareness campaigns. 3 level पे काम चल रहा है। Okay. So what is the meaning of strong organization structure? Now to control the drug trade, so Prime Minister has emphasized on a strong organizational structure. On account of this, the Home Ministry has continuously been working on strengthening the legal provision. So first is, in 2019, 4-level NCORD mechanism was strengthened for better cooperation and synergy. The apex level committee, executive level NCORD committee, and state level NCORD under the presidentship of chief secretary, district level NCORD under the presidentship of district magistrate was formed. The National Narcotics Control Bureau was made the nodal agency. So basically जितना भी हमारा नार्कोटिक्स के लिए कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन चलेगा वो इसके थ्रू काम करेगा।
Then JCC, Joint Cooperation Committee. What is this? To get to the root of the smuggling of narcotics and to investigate the cases related to large-scale seizure of narcotics, Joint Cooperation Committee has been formed. Then narco-related national database and reformation of NCB cadre. Let's see. So reformation of the Narcotics Control Bureau to increase its capability and outcomes was proposed. So creation of 682 posts and construction of 5 new zonal offices in the first stage. And narco related national database. So NCB is preparing the database on narcotics in terms of funding, narco terror, trends on smuggling of dopes, detailed description related to criminals will be included in the database. Then misuse of prescription for double use. डॉक्टर से लिखवा लेते हैं लेकिन यूज कहीं और होता. Now, to control the misuse of prescription drugs, a permanent interministerial committee has been formed under the Ministry of Family Health and Family Welfare. Experts related to the farm sector, Medicinal Commission, Narcotics Control Bureau, and industry have been included in this committee. Then, strict investigation process for financial supervision. For the seizure of money made through narcotics trade and to take action on this, rigorous analysis of financial documents is done. Its work is to find out about the money laundering networks, hawala transactions related to smuggling of narcotics. Important information is shared with the concerned agency. आमतौर पे कैश वेस्ट होता है इसका नेटवर्किंग सारा, तो वो कोशिश कर रहे हैं ट्रैक करने के लिए, बिकॉज इफ यू ट्रैक द फाइनेंस यू ट्रैक द क्राइम. देन स्ट्रिक्ट विजिलेंस पॉलिसी ऑन द सी रूट. अब सी रूट जो है ना इंडिया में, वो एक तरफा ट्रबल नहीं है, सिर्फ नारकोटिक्स के लिए नहीं है, टेररिज्म के लिए भी इशू. So about 60 to 70% of narcotic drugs are smuggled through the sea route. The government is taking special measures to stop smuggling through the sea route. क्योंकि लैंड रूट में तो कितने सारे पुलिस चेक पॉइंट ये सब आता है, तो उसमें ट्रबल रहता है ज्यादातर, इसीलिए सी रूट से. अगर अदरवाइज ड्रोन रूट भी बहुत चल रहा है आजकल. The special efforts have been made by all coastal states and UTs under the campaign in which Coast Guard, Navy, Port Authority, etc. have been made stakeholders in the state level NCORD committee meetings, and measures were taken to ensure that comprehensive policy in which proper scanning of all the incoming, outgoing tankers can be done in all ports by these stakeholders. The Ministry of Shipping has been asked to take steps to facilitate equipment related to container scanners and coordination with internal or international institutions. So DEA, that is in USA, AFP, NCA, RCMP, अलग-अलग countries के अंदर international agencies हैं, and it has been very helpful in controlling the international drug mafia, because इनकी जो प्रोसेसिंग करने के लिए लोग आते हैं ना, वो ज्यादातर इधर उधर से ही आते हैं, इंडियंस को नहीं मालूम है, हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है टू क्रिएट कोकेन और अदर काइंड ऑफ, yeah, I don't want to name any particular country or countrymen, but yes, they do come from outside to process this thing, to make it into, mostly the Nigerians, they do this, South Africans, Nigerians, they do this. So they are into this chemical engineering business of trying to create synthetic drugs from opioids. So इसके लिए ये coordination बहुत जरूरी है. Then drug network chart and mapping. So to work on the source and destination of narcotic drugs, a complete drug network chart is prepared and mapping is also done. कहाँ से शुरू हुआ, कैसे control होगा. Then narco canine pool. So to stop the smuggling of drugs in an effective manner, instructions have been made to develop a national level narco canine pool. So basically dogs that can smell it out. So वो भी बनाना जरूरी है. So that's what we are trying to do with respect to drug trade. Now, coordination with narco institutions. First is coordination through 4-level information of NCORD, जो अलग-अलग NCORD offices बनाए हैं. So attempts are being made to solve the issues faced by the central and state level agencies in operation and also law enforcement. Now, NCORD meetings are taking place at all levels regularly. And based on that, they are, trying to integrate the drug data, information management, government orders, laws, mapping, rules, जितना भी ऊपर पड़ा, सब कुछ वहाँ पे coordinate हो रहा है.
and coordination between center and state level stakeholders. तो कौन-कौन है देखिए. Given the importance of coordination system, the Home Ministry has issued instruction to include all other central level stakeholders related to narco mechanism, such as Chemical and Fertilizer Ministry, Pharmaceutical Department, School Education and Literacy Department, Shipping Ministry, NCRB, National Investigation Agency, Indian Coast Guard, DRI and Department of Post. ये सब मिलके ड्रग मेनेस को कंट्रोल कर. An anti-narcotic task force. So Home Minister has ordered an anti-narcotic task force will work under the ADG and IG level people in police system of all the states. And there is a narcotic training module. तो जितने भी हमारे फ्रंट एंड पर्सनल हैं उन सबकी ट्रेनिंग नारकोटिक्स के अंदर होनी है. तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, स्टेट पुलिस फोर्सेस, they will be going through this. Then control of drugs and darknet. See, one thing is that you can search for something on web through search engines like Google or maybe Yahoo or something like this. But there are other search engines specially designed for the dark web. Yeah, dark web is something which is hidden from the one that is in the light of the day. तो उसके ऊपर आप इसी तरह से जैसे Amazon है, ऐसे ही e-commerce platforms उधर भी. तो वहां से आप weapons, drugs, all kind of nonsense goes on there. तो वहां से आप ये सब चीजें खरीद सकते हैं. मनी ट्रेल्स भी उनके ऐसे नहीं है कि आप अपने बैंक अकाउंट से डिटेल शेयर करके कुछ कर रहे हो या उधर से कोई कुछ कर रहे हो. इट वर्क्स थ्रू क्रिप्टोकरेंसी. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दैट इज अनदर थिंग दैट इज गोइंग ऑन देयर. So this is something again a very much a cause of concern in terms of security establishments and the way they need to work. तो इसके साथ कोशिश कर रहे हैं. So emphasis on information technology to control darknet and cryptocurrency in illegal drugs and instructions issued to develop coordination in the form of submac. Then prevention of farming of illegal drugs. तो ये ड्रोन सैटेलाइट के थ्रू देखते हैं कि कहीं पे ओपीएम कल्टीवेशन और ये सब तो नहीं हो रहा, कैनबिस कल्टीवेशन तो नहीं हो रहा. Then drugs, digital and allied forensic. Forensics level पे we need to be able to track 3 areas: drugs, then their currency aspect, how they are being traded digitally, and the allied aspect. So allied forensics means all kind of allied agencies. Okay. Police may be there, civil departments may be there, transport department may be there. So all this. So all those levels की किस level पे कहाँ से क्या move हुआ, we need to study it. उसके ऊपर काम चल रहा है. So these are all the dimensions basically and recent initiatives also. जब भी drug trafficking के ऊपर question आएगा तो ये useful रहेगा. Then next is public awareness campaign. Now, central government with respect to drug trafficking again has started a public awareness campaign. तो ये एक important aspect होता है. First is narcotics call center, MANAS. So this has been established. So it's a communication bridge between all agencies and the public. So you can report some drug trading happening through this particular center, or you can seek help if you are an addict. Either ways it can go. Then efforts to make the youth aware. So de-addiction centers established in all the main prisons and national level attempts are being made for awareness among youth and students. Then Nasha Mukt Bharat Oath campaign. So this was started by Prime Minister. It's an e-oath campaign. You can just go online and sign up. What are the changes after all this? So after the efforts since 2014, there is a 100% increase in seizure of narcotics, 152% increase in number of cases against people involved in the narcotics trade. So what are the special campaigns which are going on against deadly narcotics? So though the last few years, enforcement agencies are focusing upon synthetic drugs such as ketamine, mephedrone, which are more deadly and powerful, along with the traditional drugs like marijuana, cannabis, heroin. And in the last 5 years, 61 new psychotropic materials were notified. इतने इनके variants आते रहे. In 2021, Indian agencies seized around 14,000 kg of buprenorphine, then alprazolam, ये तो normal painkiller capsules जैसा होता है, and tramadol. तो जब सर्जरी होती है तब इस पे जाते हैं alprazolam पे. ठीक है. So
लेकिन ये भी लोग इनका भी कंजम्पशन कर लेते हैं। Then seizure of modern narcotics in kilograms. So morphine, heroin, ketamine, imagine. This is like 2.5 to 3 crore rupees per kg. This is the kind of commerce that is there. और जो लोग ऑडीज BMW एक्स सीरीज ये सब चलाते हैं उसमें वो 1 kg ले जाते हैं एक बार में, तो उनको 10% तक का कट मिलता है। अब वो 1 करोड़ में से 10 लाख तो एक चक्कर में निकल गया, इकट्ठी 2-4 किलो एक बार में चक्कर लगाया, गाड़ी फ्री हो गई। ये सिचुएशन आ रखी है। तो इसलिए ये जब पंजाब में ऐसा ट्रेंड देखने को मिला कि बहुत हाई एंड लग्जरी कार्स आर रोमिंग अराउंड फ्लाइंग ऑन दी स्टेट्स एंड दे आर हार्डली स्टॉप्ड बाय ट्रैफिक कॉप्स आल्सो, ये सोच के कि यार ये तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा या कोई अच्छा बंदा ही होगा, तो ड्रगीज तो ऐसा क्यों नहीं करेंगे। तो ये मुश्किल हो जाती है उनको ट्रैक करना। एंड हमने तो पंजाब में हर तरह की चीजें सुनी है कि मिनिस्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो खुद अपनी गाड़ियों में करते हैं ये सारी तरह की ट्रेडिंग। तो व्हाट कैन बी से एंड डू अबाउट इट? अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेके एक टफ स्टैंड ले रही है तो डेफिनेटली लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मे कम आउट। सुनने वाले इंसिडेंट्स तो कम हुए हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी भी काम बहुत बाकी है। ग्राउंड लेवल पे आई कैन टेल यू इन Malot, that is the city I was from, and therein everybody knew that in our society this particular person is into drug trade business. The house भी सबको पता है कि ये बंदा कर रहा है। पुलिस उसको लेके भी चली जाती है कभी कभी उठा के, लेकिन फिर छोड़ देते हैं उसकी, कोई ना कोई बेल हो जाती है, कुछ हो जाता है, फिर छूट जाता है, फिर वो अपना काम करते रहते हैं ड्रग ट्रेड का। केसेस भी चल रहे हैं उनके अगेंस्ट, ड्रग ट्रेड भी चल रहा है। अभी रिसेंटली उसको एक बंदे को उठाया है, द पर्सन आई डोंट वांट टू नेम, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कितनी देर तक वो जेल में रहता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर छोड़ देते हैं, बिकॉज इनकी हालत ऐसी होती है ना कि ज्यादा देर अंदर रखेंगे तो कस्टोडियल डेथ वाला केस बन जाएगा, और अंदर रख के अगर ड्रग्स इनको पुलिस देना शुरू करेगी इनको जिंदा रखने के लिए, तो वो फिर अपने आप में एक हर्डल है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दिस सिचुएशन। ग्राउंड लेवल पे इट इज वेरी डिफिकल्ट। Huge money is involved, sir. It can never be stopped, sir. Even if huge money is involved and you really want to deal with this, it's very difficult to deal with this because unless you are ready to kill them, you will not be able to solve the problem. And this is not a crime worth killing for, उस तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ड्रग एडिक्ट्स हैं, अब उनकी एक सजा लिमिटेड सजा है, उनको फांसी की सजा तो है नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या हमारे लीगल स्ट्रक्चर के अंदर। कुछ कंट्रीज में है फांसी की सजा सिर्फ ड्रग ट्रेड करने के लिए, इंडिया में नहीं है। तो या तो हम उस लेवल तक प्रिपेयर्ड है, वी हैव टू किल देम, those who are in the drug trade, just shoot on sight. If that kind of a situation is there, then maybe we can deal with it. But till then, it's very difficult. So many employees of DSF, IB, everybody is involved in all this. Yes, many are. Because the money is so huge. Like I told you, so many luxury cars are flying and they carry just 2 kg and it is done. गाड़ी का खर्चा निकल गया. Okay. Now, policy, war on terror. अब टेररिज्म इज अनदर टॉपिक जो जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे। मेरे हिसाब से तो आप अगर ये वाला डॉक्यूमेंट ही अच्छे से पढ़ के चले जाओ ना, तो आप क्वेश्चंस बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। जो बाकी क्वेश्चन आंसर वाला डॉक्यूमेंट है उसके अंदर उसका इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कंक्लूजन कैसे करना है, 4-5 बेसिक पॉइंट्स क्या होने चाहिए, वो देखने के लिए वो यूज कर सकते हो। लेकिन मेनली यू शुड फोकस ऑन दिस डॉक्यूमेंट बिकॉज इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। 4 क्वेश्चन आने इसी में से हो जाएंगे। तो जीरो टॉलरेंस, demoralized terrorism. So let's see. So amendment to the NIA Act in 2nd August 2019. JNK करने से पहले, that was on 5th August, पहले ये किया। So new crimes included in NIA jurisdiction, expansion of the territorial jurisdiction of NIA. दो चीजें की गई थी। क्या amendment किया गया? First, right to seize money, property earned through terrorism, and right to declare a person terrorist. ये दोनों NIA के अंदर amend किया गया 14th August 2019. Then integrated work plan to control terror financing. So 25 points are focused: jihad, terrorism, northeast insurgency, left wing, Kashmir, FICN, that is financial, then narcotics, non-profit organizations, even NGO, and hawala. इनके ऊपर specific focus है अभी। Supposing अब
See, I have another business in which I provide software as a service to my clients in USA और Canada. और उसमें अभी क्या हो गया, पहले नहीं होता था, अगर 50,000 से ज्यादा कोई भी अमाउंट मेरे अकाउंट में आ रही है, मुझे रिसीव करना है, तो उसके लिए पहले मुझे बैंक से एक कॉल आएगा कि सर ये आपके जो अमाउंट आ रहा है ये किस कंसर्न में आ रहा है, आपने क्या सर्विस प्रोवाइड किया था। हालांकि ये अमाउंट रिसीव करने से पहले मैं एक रिसीविंग ऑर्डर अपने नेट बैंकिंग से जाके क्रिएट करता हूँ, आई एम टू रिसीव दिस मच अमाउंट एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, और वो मैं उसको एक मेल भी करता हूँ, वो सारा ऑर्डर जाता है, बट स्टिल even after that has been processed is called basically wire transfer. तो वायर ट्रांसफर के हर 50,000 के ऊपर के अमाउंट कोई भी होगा, नीचे का होगा तो नहीं पूछेंगे, ऊपर के अमाउंट में हमेशा पूछते हैं। वो क्यों पूछते हैं? एनजीओ यूज्ड टू से कि हमें क्या पता किसने डाल दिया, हम तो एनजीओ चला रहे। तो इस चक्कर में वो जो टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग फाइनेंसिंग, ये सब चल रहा था, नारकोटिक्स फाइनेंसिंग, अभी ये एक मेजर चेन ऑफ इवेंट्स शुरू हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट, integrated work plan to stop radicalization. So coordination in efforts for de-radicalization by Home Ministry, strategies prepared by different ministries, institutional mechanisms were established to keep up vigil on the execution, revamping multi-agency center, working multi-agency center on work, power and duty order 2022. तो MAC को क्या किया गया देखिए, expanded and many challenges like cybersecurity, narco-terrorism, illegal gun network, organized criminal networks, emerging hotspots of radicalism were added to its area. National Memory Bank established and implemented with effect. A central database was created on the basis of information. So basically to coordinate action against terrorism. Other improvements kya kiya gaya? SPG Act 1988 was amended. So Honorable Prime Minister made SPG rules more effective to ensure complete protection. Special protection group, उनका काम है ये, सारी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको. Amendment in the Arms Act 1959 to stop illegal smuggling and use of weapons. Then, for private areas, the weapons and ammunition production area was opened for private sector. 6 for Justice was declared an illegal association. और इसके अगेंस्ट केसेस भी शुरू किए थे, फार्म आंदोलन के बाद की बात है. Then expansion in the charter of the Police Research and Development Bureau. तो जैसे कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ है, वैसा ही एक R&D ब्यूरो पुलिस के अंदर भी, तो वो भी अपना काम इन्वेस्टिगेशन लेवल पे यहाँ से करते हैं. इसका इफेक्ट क्या हुआ? आफ्टर 2014 नो बिग टेरर अटैक्स इन इंडियन सिटीज, empowered India, so significant reduction in terrorism has happened. Under the new amendment, 38 people have been declared terrorist. For example, recent Khalistan activist Amritpal Singh. Latest क्या चल रहा है उसका? अभी तो खबर ही नहीं आई. Sir, he is not declared terrorist, sir. Yeah, but he has been put under NSA, no? Yes, sir, but not declared terrorist. Okay. What he has been declared? Sir, he charged under sedition, UAPA and all other activities. But terrorist वाला तो NIA वो declare करते हैं, sir. Sure. Sure. कौन declare करता है? Sir, MHA कर दिया. देखो. So सेपरेटिस्ट के लेवल पे अभी डिक्लेयर किया है. Yes, sir. वो बाकी तो अभी इसके अगेंस्ट जब केस चलेगा ना. Sir, he has been thoroughly interrogated, and on his intelligence only these all people are being killed outside India. Yeah, that is happening. But right now he is being charged under UAPA and NIA both. So NSA. whenever somebody, NSA and UAPA both. So whenever somebody is charged under UAPA, Unlawful Activities Prevention Act, we consider the fellow as terrorist only. You know this? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में आप अनलॉफुल पर्सन डिक्लेयर कर देते हैं. टेररिस्ट डिक्लेयर करना अलग है. You have to. If you are charged under UAPA, then that itself means कि टेररिज्म में आगे हो आप डेफिनेशन में. हाँ, डेफिनेशन में आगे, बट टेररिस्ट नहीं हुए सर. डिफरेंट है दोनों से. मैं बताता हूँ क्या डिफरेंट है. देखो, जो टेररिस्ट है उसमें हम ये बोलते हैं कि जब तक कोई उन्होंने वायलेंट एक्टिविटी कैरी आउट नहीं किया खुद से,
कोई किलिंग नहीं हुआ, तब तक टेररिस्ट की डेफिनेशन में नहीं आते प्योरली, ठीक है। लेकिन जब यूएपीए के अंदर चार्ज होते हो आप, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मैकेनिज्म है यूएपीए के अंदर, तो उसमें डिटेन किए जा सकते हो, ठीक है। बस अभी वायलेंट एक्टिविटी रहती है इनके सिर पे डालने को, तो वो नहीं डाली हुई, ओके। So far as Amritpal Singh himself is concerned, ना, he has not killed anybody. बस इतना ही है। रेडिकलिज्म उस लेवल तक है, तो बस इस वजह से टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं हुए, हो जाएंगे क्योंकि यूएपीए के अंदर डाल दिया तो कोई ना कोई चार्ज तो इन फ्यूचर लगेगा। Sir, it were अभी again हाँ, coordinated by ISI and they had वो common. क्योंकि फाइनेंशियल नेटवर्क्स तो उन्होंने ट्रेस कर लिए, अब मोमेंट फाइनेंशियल नेटवर्क ट्रेस कर लिए तो फिर वो टेररिज्म का चार्ज लगाने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। सर एक्चुअली हुआ क्या था कि जितने ये जो कश्मीर वाले हाफिज सईद had formed लश्कर ए खालसा एंड सैयद पीरवीर जो इधर उधर कश्मीरी एलिमेंट थे उनको उठा के उसमें डाला गया था. They were हाँ, coordinating to revive terrorism in Punjab. yes, so basically when you trace terror financing network also, no, so that is something that is good enough to charge somebody as a terrorist. You don't need a lot of evidence to do that now. वो तो गवर्नमेंट ने अपनी चार्जशीट डालनी है, अभी वो चार्जशीट डाल नहीं रहे बिकॉज दे वांट 2024 इलेक्शन टू हैपन फर्स्ट। अभी इनको पहले इन्वेस्टिगेशन में ही रखेंगे, इनसे जो निचोड़ सकते हैं निचोड़ेंगे, उसके बाद चार्जशीट डाल के फिर उसके बाद सजा देंगे। एक गैंगस्टर था सर हरविंदर सिंह रिंदा, he has been declared as terrorist, not. हाँ, many will be in the process, many will be done. The reason is they are not charge sheeting them finally because they want to extract as much information that can be. चार्ज शीट होने के बाद तो ना फिर जुडिशियल प्रोसेस शुरू हो जाता है। Once you declare somebody as terrorist, then the judicial process starts. जैसे कि मुंबई टेररिस्ट अटैक के अंदर हुआ था, फिर तो रादर मुश्किल है। अभी क्या है ना, यूएपीए और एनएसए के अंदर डिटेंशन अलाउड है, जितनी देर मर्जी करके रखेंगे, सिर्फ उसको रिन्यू ही करना होता है। 1 साल तक तो डिटेंशन अलाउड ही होती है। तो इस वजह से, हाँ, इस वजह से दे आर ट्राइंग टू कीप इट इन दैट ब्रैकेट ओनली। इनसे नेगोशिएट भी कर लेते हैं सर कि तुम्हें छोड़ देंगे बाकी। Okay, so reduction in shelf life of terrorists. So now the shelf life of terrorists, that was about 2 years in 2017-18 कि मतलब एक बार terrorist declare हो गया, उसके बाद 2 साल तक हरकत करता रहता था। Now it has been reduced to few days only. Okay, limiting the ability to execute terror incidents. So ये बहुत जल्दी हो जाते थे पहले, अभी लेकिन 1-2 ही ऐसा कुछ कर पाते। Ban on glorifying terrorism in any way. So इवन गन कल्चर फॉर दैट मैटर, पंजाब में तो बैन लगा दिया गया, बट टेररिज्म के ऊपर डेफिनेटली बैन। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। सो इंटरस्टेट रिलेशनशिप गॉट बेटर विद पॉलिसी सोल्यूशन थ्रू डायलॉग। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर ज्यादा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ये भी रोल है, और ये वाला एस्पेक्ट आपका पॉलिटी में गवर्नेंस के अंदर उधर ज्यादा यूज होगा, सिक्योरिटी के अंदर कम यूज होगा, ठीक है। सो क्या किया गया देखिए, Interstate Council formed for center-state relationship was unable to perform because of the political differences, opposite ideologies, and lack of communication. Abhi, we are trying to work upon progress, peace, and protection in the states. So, how it has come forth? So, there is Samvad se Samadhan. This is the ideology mantra that has been adopted for the past 8 years without any ego or politics. And what they're trying to do, the Interstate Council is making continuous efforts for its 4 of the 5 aims. First is cordial relationships, solution on interstate issues and conflicts through agreements, encourage regional support between the states, provide platform for all states of the country to debate and discuss national issues, establish a strong support system for all stakeholders. That's what is actually going on in terms of interstate coordination. Okay, what have we established? So after a gap of 10 years, 11th meeting of the Interstate Council was held on July 2016 under the chairmanship of Prime Minister, and 4 main agendas came out. First is consideration of the Panchi Commission, recommendation on center-state relationships, use of Aadhaar and direct benefit transfer for most of the centrally sponsored and central sector schemes, improvement in quality of education, to stand against militants, terrorists, improvement in policing, police modernization and intelligence sharing. तो 4 बेसिक चीजों के ऊपर बात हुई। रिजल्ट्स क्या है? Steps ahead towards solution through continuous meetings. So इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग्स अब बढ़ाई गई,
So total meetings, total popular issues, and total solved issues. So they have increased. Obviously, coordination better हो जाता है. Achievements क्या हैं अब in nutshell लिखने लायक है. So on account of encouragement to the open-minded communication by Honorable Home Minister, the solution process to the long-pending issues among the states have accelerated. What has been done? The solution to the issues of storage of food grains. आमतौर पे FCI का स्टोरेज होता था, फिर स्टेट गवर्नमेंट को स्टोरेज प्रोवाइड करती थी, फिर उसके बाद प्राइवेट शेड्स से रेंट पे लिया जाता. दैट यूज्ड टू बी द वे फूड ग्रेन वर स्टोर्ड इन इंडिया. Now, the issue of discrepancy in standards of storage of food grain was pending for a long time. जैसे open racks में भी रखते थे. Now, in a meeting in Raipur, the Honorable Home Minister took cognizance of this issue in January 2020, and on 22nd January 2021, the issue an amended standard and found solutions to the issue. तो अभी जो स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स है उसको लेके काफी हद तक ये सेटल कर दिया गया कि जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब गवर्नमेंट है, पहले बहुत सारी स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स पंजाब में ओपन सिलोस के अंदर होती थी. अभी वो नहीं करेंगे. अभी उसको पूरे इंडिया में जहां जहां पे स्टोरेज है फैसिलिटीज जो कि कवर्ड शेड के बेसिस पे है, अब उसमें वो स्टोर करेंगे. पंजाब में कम स्टोर करेंगे. तो ओपन अब आपको रैक्स एंड सिलोस में बहुत कम फूड ग्रेन स्टोर्ड मिलेगा. देन रॉयल्टी ऑन प्रोसेस्ड कोल. So Jharkhand government raised the issue of royalty on coal in 24th meeting of the Eastern Regional Council held at Bhubaneswar. So basically क्योंकि माइनिंग यहाँ से हो रही है तो स्टेट को उसमें से रॉयल्टी मिलनी चाहिए, ऐसा प्रावधान है. The coal ministry did an investigation and came to the conclusion that the royalty will be paid on run of mine and not on processed coal. A way to solution opened. So run of mine basically means कि कितना माइन हुआ, ना कि कितना प्रोसेस हुआ. ये दोनों में डिफरेंस है. Processing can be less than what is being mined. So accordingly, the royalty to be paid. Then permission to lay down 132 kV interstate transmission line. So this is in West Bengal. Then सिर्फ इनके नाम ऊपर से पढ़ लीजिए, उतना बहुत है. Swift transfer of land for execution of central projects. So this is under Setu Bharat project. तो कभी भी लाइन प्रोजेक्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री या कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए ट्रांसफर ऑफ लैंड आराम से हो पाए. ये गति शक्ति के अंदर भी आता. ठीक है. So just remember this much. Solution of food grain storage, royalty on processed coal for Jharkhand, permission to lay down interstate transmission line in West Bengal, swift transfer of execution for central projects in West Bengal and other states. बस ऐसे एग्जाम्पल्स के तौर पर याद कर सकते हो. Then conflict between West Bengal, Malda and Jharkhand on state borders. तो demarcation of boundaries को लेके जो conflict है उसको resolve किया गया. Then there is a dispute between fishermen of Andhra and Tamil Nadu on catching fish. Investigation of antibiotic remains to in the export of lobster. Then the resolution of challenges raised by Tamil Nadu in development of renewable energy. इसमें से 3-4 examples याद रख लो. Basically, the initiatives that have been taken by Home Ministry through Interstate Council or the Interstate Council mechanism, and how that has been helpful in resolving various disputes. वहां पे ये काम आएगा. ठीक है. So sand supply from Tamil Nadu, permission to Puducherry import sand, the speedy and righteous disposal of POXO issues, members appointed in the Bhakra Vyas Management Board, like this. Then Forensic Science Law College, UIEDAI database on verification of sea fishermen, unique identification दे देंगे उसको भी. Then coverage of bank IIPPB branches within the range of 5 km from the villages. All this is basically as per the interstate council or the zonal council collaboration. Interstate issues, interstate relation को बढ़ाने के लिए. तो recent examples कोट करने को मुश्किल हो जाती है. वहां पे interstate relation को बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, वहां बताने के लिए ये काम आएगा. Next comes the cybercrime. So curbing cybercrime with real-time reporting, use of high-end technology and creating awareness. तो ये core aspect है जिसके ऊपर काम चल रहा है. So ensuring hygiene of cyberspace, basically reducing cybercrime in cyberspace. So what is happening there? First is a forensic laboratory network, just to see what has happened, how it has happened. Capacity building, research and development, cyber awareness, हम जैसे लोगों के लिए.
ensuring cyber hygiene of cyberspace, and real-time reporting of cybercrime. So these are the 5 dimensions through which we are trying to protect the cyber systems in India. Now, in 2017, Home Ministry formed a Cyber Information Security Division. तब से चल रहा है. Major tools to fight cybercrime in coordination with Home Ministry or UTs are: first, prevention of cybercrime against women and children, police upgradation project, Nirbhaya Fund, Indian Cybercrime Coordination Center, I4C. तो ये 4 बेसिक एस्पेक्ट चल रहे हैं. अब ये साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या करेगा? I4C. Let's see. So, to deal with cybercrime in the integrated and comprehensive manner, Home Ministry and the Cyber Crime Coordination Center, under this provision, 7 institutions with different aims were being launched. Cyber Crime Coordination Center में क्या क्या है? पहला है TAO, so that is National Cybercrime Threat Analytic Unit, and there is NCRP, that is National Cybercrime Reporting Portal, and there is NCFL, that is National Cyber Forensic Laboratory, and there is a training center, and there is a forensic lab ecosystem, platform for joint cybercrime investigation team, research and innovation center. तो ये सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं. आपको इतना याद रखना शायद मुश्किल हो मीन्स में, तो एटलीस्ट इसका साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का नाम याद रखिए, और ये याद रख लेना कि 7 इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके लिए लॉन्च किए गए होम मिनिस्ट्री के द्वारा. ठीक है, चाहे इनका नाम नहीं भी याद रहेगा मीन्स में चलेगा. देन अदर इनिशिएटिव्स. So civil financial cyber fraud reporting and management system has been initiated. So there is a national toll-free helpline 1930. ये जो याद रखना क्योंकि ये न्यूज में भी रहता है. Then Center for Missing and Exploited Children, CFSL, National Forensic Science Laboratory, उसको सेल किया cyber security के लिए. Then with the help of Cyber Friend developing a cybercrime awareness, 7 JCCT formed. So joint cybercrime teams formed for cybercrime hotspots such as Mewat, Jamtara. सुना ना नेटफ्लिक्स में सीरीज भी है Jamtara. Ahmedabad, Hyderabad, Chandigarh, Visakhapatnam and Guwahati. These are cybercrime hotspots in India. IT hotspots भी हैं और cybercrime hotspots भी, दोनों हैं. National Cyber Forensic Laboratory. So this is formed for the forensic analysis help, ताकि पता चले क्राइम कैसे हुआ, उसको ट्रैक कैसे करेंगे. Then encouraging cyber hygiene. So this is basically awareness generation. Okay. What is the outcome? So 10 lakh cyber complaints have been registered. Imagine, just within 2-3 years, more than 21,000 FIRs have been logged, and 9 crore people have used this book. Get the amount of people affected by cyber crimes in India. And 154 cybercrime information shared with states and UTs. Then analytic reports on 50 cyber attacks modus operandi has been prepared. 32,000 complaints registered with civil financial cyber fraud reporting and management. Through a national cyber forensic laboratory analysis, till now, more than 5,000 forensic services have been provided. कौन सा IP address था, किससे शुरू हुआ, and so on. You can remember 4 or 5 of this, and that should do for you. Okay. Then free vast online course that's called Cytrain platform on cybercrime analysis, forensic and prosecution, etc. initiated. Until now, 16,000 police officials have registered and more than 5,000 certificates have been issued. आमतौर पे पुलिस ऑफिशियल्स के लिए आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है. Then forensic science. Justice is inherent in forensic science. See, forensic science essentially is to track the crime. Okay. So to integrate our criminal justice system with forensic science investigation, make forensic investigation compulsory for crimes that are punishable under law with a sentence of more than 7 years. Mobile forensic investigation facility to be provided in all districts, maintaining independence, autonomy and fairness of forensic investigation. तो जिस भी केस में 7 साल से ज्यादा की सजा है, उधर हम कोशिश कर रहे हैं कि फोरेंसिक के एविडेंस साथ में लगा हो, सिर्फ बयानों के बेसिस पे ना हो. So what is the 4-tier strategy to increase forensic science? So first is infrastructure, second experts, basically the human resource, then technology, and then R&D.
ये 4 बेसिस पे काम होगा। लोग होने चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, R&D होना चाहिए। ठीक है, क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं अभी? तो फर्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन गुजरात, इंस्टीट्यूशंस जहां से लोग पढ़ के पहले निकलेंगे। DNA analysis facility at Central Forensic Science Laboratory in Chandigarh. Then special units have been established for investigation of sexual harassment and murder cases. So there it will go on. Then for the cases of sexual harassment, guidelines have been issued for collection, transmission, and storage of forensic proofs. So 3 new central forensic laboratories are there. Basically, we are trying to get more evidence into the crime aspects. The reason for that is इंडिया में ना कन्विक्शन रेट बहुत कम है। इंडिया में रेप, मर्डर, डकॉइटी जैसे केसेस में 4% कन्विक्शन रेट। कहने का मतलब 100 में से सिर्फ 4 लोगों को सजा होती है। इस वजह से इसको इम्प्रूव करने के लिए वी नीड मोर एविडेंस, तभी जाके हम कोर्ट में चीजें प्रूव कर पाएंगे कि वाकई में कुछ क्राइम किसी ने किया। उसी केस में ये हो रहा है। यू सी, conviction rate will not improve till the process of punishment will not be based on a forensic report. That's the core thing here. Next is border management or border security. ये भी एक मेजर टॉपिक है। सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर्ड हैं बिकॉज ये सब MHA के प्रोव्यू में आते हैं, जितने भी आपके सिक्योरिटी इश्यूज में सिलेबस में चीजें दी गई। लेट्स सी, with the vigilant security system, Indian borders became impenetrable. So let's see how it has worked. So what is our border policy right now? BSF, Border Security Force, was established. Focus shifted on border security, but the development of the people of the border area was ignored. तो सिक्योरिटी लेवल पे तो काम कर रहे थे, डेवलपमेंटल लेवल पे कम था। ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी as Prime Minister's tenure, focus on border management. There's one border, one force. This was started. पहले क्या है ना, इंडिया में कहीं असम राइफल्स हैं, कहीं BSF है, कहीं आर्मी है, उसकी अलग अलग यूनिट्स डिप्लॉयड है, इस तरह से काम चल रहा है। तो इसलिए वी आर ट्राइंग टू हैव वन बॉर्डर वन फोर्स काइंड ऑफ अ सिचुएशन। In the first decade of independence, border area was ignored completely. So POK, Aksai Chin, NEFA. तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो इसमें से कुछ एरियाज लूज भी किया हमने। Now security in the leadership of मोदी जी, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, तो उसके पैरामीटर पे भी काम करना है। अभी देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट इज क्लियर पॉलिसी, सेफ बॉर्डर। तो फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन क्रिएटेड इन बॉर्डर एरिया, जैसे कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग एंड एवरीथिंग। In the villages of border areas, 100% implementation of welfare programs has been started. जितनी भी सेंट्रल की स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम्स। Easy connectivity of border areas with railways, waterways, roadways, encouraging trade from borderlands, direct communication with people through people and people to people contact. So this is basically trying to integrate them in the developmental process. Tactical या security decisions क्या हैं? Rapid progress in border infrastructure in terms of fencing, roads, floodlights, and outposts, border outposts. Then, Home Ministry declared an appropriate government for rehabilitation and rearrangement in border security. Then, development of border areas through rapid implementation of Frontier Development Festival, Vibrant Village Program, and Border Area Development Program, and border trade. So, these are the main things that we are working upon. What is the achievement so far? So fencing. So right now, about 140,000 kilometers something of fences have been constructed, especially along the Indo-Bangladesh border, Indo-Pakistan border, and Indo-Myanmar border. China border पे fencing का मतलब ही नहीं है, सब पहाड़ हैं, बड़े-बड़े हिमालयस, तो कैसे करेंगे? Next, border roads. तो अब कितना बॉर्डर रोड बना लें, ये सारा डेटा थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए याद रखना। एक रीडिंग मारो और जनरलाइज कर लो। वैसे 380 किलोमीटर फॉर एग्जांपल, डोंट नीड टू गो इनटू द पॉइंट्स एंड समथिंग, इधर 1,40,000 समथिंग लाइक दिस कैन वर्क फॉर यू। ठीक है। देन फ्लड लाइट, सो कंस्ट्रक्शन completed through 97.1 kilometer in the Indo-Bangladesh and Indo-Pakistan border. Then border outposts, so construction of 121 border outposts have been completed in various areas.
जनरल याद रख सकते हो आप. आई डोंट थिंक कि फिगर्स याद रखना यहाँ पे आसान काम है. ठीक है. Then clear policy, safe border. So what they are trying to do is, for the development of critical infrastructure, construction of 18 feet tracks and other structures was approved in border areas of Arunachal Pradesh. ये अभी भी चल रहा है काम इसके ऊपर. We have some friends posted in Arunachal Pradesh, so they keep telling कि इस पे काम हो रहा है अभी. And in Ladakh, ultra modern BOP border outpost in Lukung permanent integrated building was completed as a pilot project, and ITBP, that is Indo-Tibetan Border Police forces, so they have shifted into it. Construction work on earthen dam for more than 179 kilometer, metal road and checkpoints come scaffolding come fighter bunkers in progress in J&K. Formation of PMU started for all border infrastructure projects of the Home Ministry for efficient monitoring. Then in principle approval of the construction of 7 observation posts, OP towers, in Harminala and Sarkrik. So these are the areas controlled by BSF in the Bhuj sector of Gujarat. Integrated checkposts. So what are they? So 9 of them along Kartarpur corridor have been created. Development of 14 integrated checkposts in progress. So अलग-अलग areas हैं जहाँ पे multi-modal connectivity इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमारी चल रही है, इंडिया की म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, जैसे कि रक्सौल, सुत्रकांडी, सबरुम, पित्रपोल. तो यहाँ पे भी वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट. इन द लास्ट 10 years, authority has made the cross border trade of rupees 3 lakh crore easier through the integrated check post. तो यहाँ ट्रेड भी है, सिक्योरिटी भी है, दोनों काम. Then there is cargo vehicle tracking system. ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कैमरा के थ्रू और उसको टाइम टू टाइम ट्रैक करते हैं गया किधर कंट्री, जिस चीज के लिए आया था उधर ही गया, इधर उधर तो नहीं. देन RFID टैग के थ्रू वी आर ट्राइंग टू सी कि कौन सी चीज कहाँ पे जा रही है. देन एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल एंड सर्वेलेंस सिस्टम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. सो जस्ट रिमेंबर द इजी टू रिमेंबर थिंग्स सो दैट एटलीस्ट यू आर एबल टू राइट समथिंग. डोंट गो इनटू टू मच फिगर्स. बी एबल टू create something like land port management system implemented in land ports for ease of doing business. Okay. Now, development of border areas, what all has been done. So, in the last 3 years, rupees 1100 crore has been spent or given to 16 states and UTs for the border area development program. Frontier development started from Kutch. Vibrant village program was passed in the recent budget 2023-24. 100% execution of flagship programs in border villages. ये 3 बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर अभी काम हो रहा है. नेक्स्ट, कोस्टल सिक्योरिटी. मैरिटाइम सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, तो देखो उसके ऊपर भी यहाँ पे है. ओके, सो कोस्टल सिक्योरिटी को लेके इंडिया में ना जो नेवी का बजट है वो बहुत कम है. हमारा ज्यादा जो फोकस रहा है वो लैंड डिफेंस के ऊपर रहा. सी डिफेंस के ऊपर हमने कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं किया. इसी चीज का फायदा चाइना ने उठाया और ज्यादातर जो इंडियन ओशन के अंदर जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनिशिएटिव है वो इसी वजह से ज्यादा अच्छा चला भी. अभी लेकिन हम नेवी के ऊपर काम कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू बिकम अ फुल फ्लैश फोर्स इन द इंडियन ओशन रीजन, बट वी आर स्टिल फोकस्ड ओनली ऑन द इंडियन ओशन एंड लेस ऑन द इंडो पैसिफिक. तो वहां पे हम कोई मेजर प्लेयर नहीं. हालांकि क्वाड के थ्रू वी आर ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट with Australia, USA, and Japan to be able to create a security architecture that spreads not only in Indian Ocean but also in Indo-Pacific. So एक joint security architecture के ऊपर हम काम कर रहे हैं, wherein we can curtail the rise of China a little bit. अब इसमें issues क्या क्या हैं जब coastal security की बात करते हैं? First is smooth execution of coastal security scheme, security of the fishermen, National Coastal Policing Academy. So पहले तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए लोग होने चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए और बेनिफिशरीज होने चाहिए. ठीक है. तो कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन कोस्टल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, जॉइंट कोस्टल पेट्रोलिंग एंड प्रोटोकॉल. सो दीज आर द 5 बेसिक डायमेंशंस ऑन व्हिच वी आर वर्किंग हियर. ओके. Now, smooth execution of coastal security scheme, what we are trying to do there. So coastal states were provided with 131 coastal police stations, 10 marine police operation centers, 60 joint teams, 161 four-wheelers,
242 two failures तो basically infrastructure provide कर. Then as far as communication and coordination is concerned, we got first national seminar related to coordination and communication on coastal security information by Coast Guard was organized. Indian Navy, Coast Guard, state government, and UT coordinated with the Indian missions based in the countries. So that's how it is being done. Okay. Then joint coastal patrolling and patrolling protocol decided upon. So to protect the coastal waters and coastline, new coastal patrolling SOP has been created. आपको याद होगा जो हमारा कोस्टलाइन है इंडिया का, अब उससे फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स जो एरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, EEZ. no. EZ is 200 nautical miles. Sorry, ये from the सर coastline. inland water boundary बोलते हैं इसको. This is called territorial water. It's called territorial water. Basically, it's like a border. इस 12 nautical mile के एरिया के अंदर अगर कोई एंटर करेगा तो उसको हमारी परमिशन चाहिए होती है, ठीक है? फर्दर 12 nautical miles जो हैं, this is called as chase zone. So then there is called high seas, 24 nautical miles के beyond. In the high seas also, अगर coastline से 200 nautical miles लें, तो we have something called as exclusive economic zone, जहाँ पे हम कोई भी economic activity like crude oil production, exploration of polymetallic nodules, fishing, tourism activities, ये सारी चीजें कर सकते होते हैं. बट इसकी डिवीजन डिपेंड करती है यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के अकॉर्डिंगली. तो अगर सपोज अब जैसे श्रीलंका और इंडिया के बीच में तो इतनी जगह ही नहीं है, तो उसमें 50-50 डिवाइड हो जाता है. लेकिन हर कंट्री के साथ थोड़ा बहुत इशू रहता है. जैसे श्रीलंका के साथ भी हमारा कच्चथीवू आइलैंड का डिस्प्यूट रहता है इस चीज को लेकर, है ना? तो कि ये इधर होना चाहिए 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर उधर होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको लेके डिस्प्यूट रहता है, बिकॉज स्केल लेके तो लाइन नहीं मार सकते, ठीक है? ओके. नेक्स्ट इज नेशनल कोस्टल पुलिसिंग एकेडमी. सो जैसे कि नॉर्मल पुलिसिंग ट्रेनिंग के लिए आईपीएस हैदराबाद जाते हैं, सरदार पटेल एकेडमी है, तो वैसे ही यहाँ पे. So right now they are getting trained at the Marine Police Foundation course in 6 batches in Dwarka, Gujarat. Then security of fishermen. So identification of fishermen was made secure through QR code enabled PVC Aadhaar cards. PVC is just a material है, polyvinyl chloride, ठीक है? तो उसमें बस फर्क ये होगा कि आइडेंटिफिकेशन करना आसान है, गीले नहीं होंगे, फिरमैन तो बेचारे गीले होंगे नहीं. Almost 10 lakh Aadhaar cards with QR codes were distributed, 3 lakh boats were registered, and color coding process for fishing boats is completed. Basically size of vessel के हिसाब से कितनी दूर जा सकती है, कहाँ जाके फिशिंग कर सकते हैं, वो कलर कोडिंग के थ्रू डिसाइड होता है. Then fish landing points were identified and surveyed, कहाँ पे फिशिंग होती है. SOP decided on protection of single point moorings. So where all you can fish, how long you can fish for, all this has been settled. पहले इतना सिस्टमैटिक नहीं होता. अभी इसको लेके कोस्टल सिक्योरिटी के इनिशिएटिव्स क्या हैं? सबसे पहला गाइडलाइंस ऑन सिक्योरिटी ऑफ नॉन मेजर पोर्ट्स. मेजर पोर्ट्स पे तो सब कुछ था ही पहले भी, नॉन मेजर पोर्ट्स पे अब काम होगा. कोस्टल मैपिंग ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड पॉइंट्स, ensuring equal coastal security organizational structure and equal jurisdiction to all states. Dedicated cadre for coastal security is being constituted. तो अलग से कैडर सर्विस होगी सेंटर में जो कोस्टल सिक्योरिटी पे ही काम करेगा. अभी कोस्ट गार्ड ही है सिर्फ जो उसमें काम कर रहा है डेडिकेटेडली. सीक आउट टेक्निकल सोल्यूशन फॉर विजिलेंस ऑफ फिश लैंडिंग. प्रिपरेशन ऑफ रोड मैप फॉर मॉडल कोस्टल स्टेट्स to ensure effective protection of coastal seas, coastline, real-time coordination between Indian Coast Guard and coastal police. Maritime boards are being set up in coastal states. Then provision of marine incidents were included in incident reporting system. कहीं फिशरीज की डेथ होती है, कहीं बहुत ज्यादा वेल्स फ्लड कर रही हैं, ऐसा कुछ भी होगा तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है तो वो भी आईआरएस के अंदर आएगा. Formation of an expert committee for the improvement of the Bureau of Port Security. Then provision of reporting maritime incidents has been incorporated in the IRS. No repeat हो रहे points. General information program.
So for awareness generation and communication, so all that has been done for fisheries. Next is disaster management. ये आप ज्योग्राफी के साथ बाद में अटैच करोगे, आज सिक्योरिटी के साथ तो उतना नहीं है. डिजास्टर वाला काम जो इसी रिपोर्ट में से तब ऐड करना है, ठीक है. तब तक आप इसको एक रीडिंग ले लो, बट नॉट टुडे. टुडे वी आर मोर फोकस्ड ऑन द सिक्योरिटी एस्पेक्ट, ठीक है. देन यूटीज, तो दिस इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज को लेके क्या पॉलिसी है फॉर द डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज. दिस यू कैन ऐड टू योर जीएस पेपर 2 एंड गवर्नेंस ऑल्सो, ठीक है. इसमें भी डेटा है, but again not very directly connected to security areas. Then tourism development, so ये आप इकोनॉमी के साथ ऐड ऑन कर सकते हो. लेटेस्ट गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए. सिटीजनशिप, सो एनी सिटीजनशिप रिलेटेड इश्यूज ऑलरेडी हमने ये पढ़ लिया हमारे पॉलिटी के अंदर, तो यू कैन ऐड इट देयर. ऑफिशियल लैंग्वेजेस, सो व्हाट हैज बीन डन फॉर स्ट्रेंथनिंग हिंदी, तो एक पूरा क्वेश्चन मीन्स का यहाँ पे अलग से है, ठीक है. So not directly again related to security, but yes, definitely important. वीजा प्रोसेस के लिए जो जनरल एस्पेक्ट है, ई वीजा एंड ऑल, तो इंडिया को कहाँ मिलता है और हम क्या क्या कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटीज हैव बीन एक्सटेंडेड बाय इंडिया टू दीज कंट्रीज, तो वीजा भी हम भी मिल जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो दिस इज नॉट दैट रिक्वायर्ड. वीजा प्रोसेस आपको मीन्स के लिए नहीं चाहिए, ठीक है. FCRA, this is very important from security now. Foreign Contribution Regulation Amendment Act 2020, क्योंकि जो NGOs हैं जो उनको हवाला ट्रांजैक्शन इधर उधर से या टेरर फाइनेंस नेटवर्क्स, नार्कोटिक फाइनेंस नेटवर्क्स, उन सबको चेक करने के लिए FCRA है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. ये सिक्योरिटी में डेफिनेटली एक क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है आपसे. लेट्स सी. So what is being done under the recent amendment? So eliminate the possibility of B-name or fake admission, and also reduction of expenditure on unproductive matters like increased salary of employees, huge bungalows and cars. तो इन चीजों के ऊपर अगर कंपनीज फॉरेन कंट्रीब्यूशन अननेसेसरली दिखा रही हैं, कई बार करोड़ों का हिसाब से पैसा ऐसे ही दिया जाता है, तो वो FCRA में उसको कंट्रोल कर सकता है. Amendment will help in effective monitoring of receipt and utilization of foreign contributions, especially to NGOs, temples, and so on, to ensure better compliance, transparency, and accountability, adherence to declared and legitimate objectives. जब भी कोई सोसाइटी रजिस्टर करती है ना, तो ये कुछ डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम क्या करेंगे, तो उसकी अब रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है हर साल की हमने क्या किया. पहले तो बस ऐसा आ रहा है जो भी कर रहे हैं, ऐसे चल रहा था. प्रोविजन ऑफ आधार नंबर फॉर ऑल की फंक्शनरीज. जितने भी किसी सोसाइटी के अंदर लोग हैं, सबके आधार कार्ड, सबके पैन कार्ड, फोटो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, थंब इम्प्रेशंस, एवरीथिंग गेट्स नोटेड नाउ. देन स्पेशली इफ दे नीड FCRA क्लियरेंस, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर चाहिए तो. Then made it mandatory to open FCRA account in the SBI main branch in New Delhi. जितनी भी NGOs हैं उनको अपना एक दफ्तर पहले तो दिल्ली में खोलना पड़ेगा अगर उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए तो, और फिर SBI मेन ब्रांच में जाके अकाउंट खोलना पड़ेगा. FCRA अलग अकाउंट है. कंप्लीट बैन ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मतलब आपके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन कोई आई, आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, दैट इज नॉट अलाउड. आप अपने ही अकाउंट में रखोगे, आप बताओगे कि आपने उसको यूज कहाँ किया, या नहीं यूज किया तो क्यों नहीं किया. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर लिमिट रिडक्शन फ्रॉम 50% to 20%. ये बेसिकली क्या करते थे कि जो स्टाफ दिखा देते थे कि हमारा तो जी इतना स्टाफ है एनजीओ का, तो उनकी सैलरीज में, एक्सपेंडिचर्स में इतना खर्चा हो गया, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर. और जो पर्पस ऑफ एनजीओ है जिसके लिए वो स्टैब्लिश किया गया, सम सोशल कॉज, सम व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू डू, हेल्थ, एजुकेशन, व्हाटएवर, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं है. अभी ये कंट्रोल करने के लिए दे रिड्यूस्ड इट टू 20%, कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते. 80% आपको पर्पस पे स्पेंड करना है जिसके लिए बनाया गया. Accurate identification of office bearers to be ensured. Who is exactly the office bearer? उसका आधार कार्ड के बेसिस पे एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन जरूरी. आमतौर पे क्या हो रहा था, MNCs, टेरर ग्रुप्स, state governments who wanted to work through non-state actors, all of them were
operating in India through this NGOs of various kind. These NGOs, ये अपना कुछ भी एजेंडा चला रहे हैं. कभी तो वो पेन बेस्ड लेफ्टिस्ट हैं, कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखते रहेंगे, इधर उधर लोगों को मिसगाइड करते रहेंगे, या फिर ये एक्चुअल में जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर वैसे सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हैं, तो ये इंडिया में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को रोकेंगे. ग्रीन पीस जैसे एक्टिविस्ट हैं. So all of them were trying to, get the money from abroad in terms of showing that as administrative expenditure, and then they will do whatever they are wanting to do with respect to halting developmental works in India. इस तरह का काम चल रहा है, इसलिए ये जरूरी था कि FCRA के अंदर अमेंडमेंट की जाए. अदर इंप्रूवमेंट्स क्या हैं? Mandatory for registered association to submit relevant details of data of change of their officials, key office bearers through online application. Facility of voluntary surrender of foreign contribution registration was given to NGOs. जो इसमें comply नहीं कर सकता, surrender कर दे FCRA registration. It has been made mandatory for every FCRA registered NGO association to submit an annual return for every financial year within a stipulated time. तो ये उनको करना पड़ेगा. तो इसकी वजह से अभी whatever money they get, they have to showcase कि भाई तुमने इसके साथ क्या किया. ठीक है. तो राइट नाउ कितने का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, कितने का रिन्यूअल है, किसको परमिशन मिल गया एंड एवरीथिंग, हाउ मेनी हैव बीन रिजेक्टेड. यू सी कितनी एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर देते हैं FCRA के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए. ओके. नेचर ऑफ केसेस. सो सस्पेंडेड और कैंसल्ड NGOs, see so many has been cancelled in India. Yeah. Then ordered prosecution or investigation, एक का ही है. Greenpeace was one. Compounding of FCRA offences. Inspection or audit of FCRA registered association. Sanctions for prosecution. So means now the government is very actively tracking कि ये NGOs की ओर में क्या क्या कर रहे हैं लोग, देखे जरा इनको. ठीक है. Next is tree plantation campaign. ये आप environment biodiversity में add on कर सकते हो. Useful there. Again, not directly related to security, but whatever is the current data in the afforestation initiative, उधर use कर सकते. ठीक है. Then moving on. Police training and honor. तो police reforms भी एक part and parcel है security architecture का. तो उसको लेके अभी क्या किया हमने? तो recent initiatives in police reforms, because recommendations बहुत आ रखी हैं police reforms को लेके, लेकिन ground level पे जो developments हैं वो बहुत कम रही. तो उस डेवलपमेंट्स को ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए ये वाला रिपोर्ट अच्छा है. ठीक है. तो लेट्स सी challenges first off. So 3 major challenges have been identified in priority of making our soldiers Ayushman by Modi government. क्या क्या aspects हैं? Lack of complete planning of health services, extremely low housing satisfaction rate and exceeding duty limit. तो पुलिस के अंदर ये 3 चीजें मुसीबतें आइडेंटिफाई की गई. Now what has been done? Establishment of a national police university. So Rashtriya Raksha University established for teaching, research and conditioning of highly qualified trained service personnel in various parts of police, criminal justice and reform administration. University will promote knowledge and skill development in police, criminal justice and reformative administrative areas by taking benefit of information and resources from industries. Now it will develop synergy with private sector. Will also set up the excellence center related to police and security. So ये सब है. Then steps in welfare of the police force. First is CAPF project, Ayushman CAPF project. So what we are trying to do, 35 lakh health cards were distributed. Basically, it's a health insurance for police personnel and their family members. So that is what is being done. Then welfare ministers for interest of CAPF. Age limit for all CAPF employees of all ranks has been extended to 60 years. So basically, retirement age बढ़ा दी गई है. Mobile application has been launched, WARB, for grievance redressal. Then there has been a large-scale construction of houses to ensure increasing in housing satisfaction rate. चंडीगढ़ में बहुत अच्छा housing unit बनाया policing के लिए near sector 25. In past 3 years, the construction of 13,000 houses, 113 barracks, the cost of around 7,000 crore has been done. तो बस एक दो चीजें नोट कर लो, इसमें सारा नहीं चाहिए.
Okay. Then every soldier gets at least 100 days to spend with his family. दो चार चीजें नोट करनी है, ज्यादा नहीं. Recruitment increased force with the new recruits. So CAPF उधर अब क्योंकि यहाँ पे स्टेट पुलिस की बात नहीं हो रही, सेंट्रल की हो रही है, क्योंकि MHA तो इसी को कंट्रोल करता है. ठीक है. So more recruitment has been done. Encouragement of NCC cadets for employments. So जिनके पास अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं उनको encourage किया जा रहा है to join CAPF. Then protection of interest of women candidates appearing for PET, that is physical efficiency test. तो अब इनका जो सी provision for disqualification of female candidates for becoming pregnant has been abolished. So this is a basic women right. So but ये पहले नहीं था, अब जाके इसको शुरू किया 2020 में. Then CAPF rehabilitation re-employment facilities for retired person where all they can be re-employed. इसके लिए 60 years के बाद ex gratia scheme. So lump sum उनको दे देते हैं शेयर, जो अगर वो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं after a certain amount of service. Then central police welfare store on the lines of CST, जैसे military canteens होती हैं वैसे ही. Increase in ex gratia, so death during action, high altitude, has been increased from 15 to 35 lakhs. Steps for welfare of police force. So capacity strengthening by expansion of basic infrastructure, border security force. इसके एक एक मेजर्स की रीडिंग ले लो, दो दो एक एक तारीख के अंदर पॉइंट्स क्रिएट कर लो ताकि वहां पे लिखना आसान रहे, बस ज्यादा तो नहीं है. CAPF पे डायरेक्ट क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जनरल जो पुलिस रिफॉर्म्स के पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे भी अप्लाई है. ठीक है. मूविंग ऑन. दिल्ली पुलिस अगेन नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये रिपोर्ट में बताना जरूरी है कि दिल्ली पुलिस को लेके क्या किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस को वही कंट्रोल करता है. लेकिन आपके लिए अलग से पढ़ना जरूरी नहीं है अगर अनलेस एंड अनटिल आप दिल्ली में सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे. ठीक है. ओके. So this you can ignore. Then Ministry of Home Affairs overall rapid administrative improvement towards smooth functioning, not required. It's more related to the structure of Ministry of Home Affairs. ये उन बच्चों को चाहिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेंस लिखेंगे. तो उधर क्या रिफॉर्म्स हुए हैं उधर एक क्वेश्चन आ सकता है पबैड में, बट नॉट फ्रॉम द GS पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. So this is it. Till I mean next class on Monday we will be focused on this document. So till then you go through a reading of this document as well. इसके जो बेसिक्स हैं वो आप देख लीजिए सारे के सारे, जैसे मैंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेट मी टेक यू रादर टू द इंडेक्स, दैट विल बी मोर हेल्पफुल. सो नेशनल सिक्योरिटी को लेके क्या आर्किटेक्चर है इंडिया में, किस तरह की स्ट्रैटेजी है, कौन कौन से अलग अलग हमारे पास लेजिस्लेशंस हैं जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं. देन एक्सट्रीमिज्म, इसके साथ रिलेटेड बेसिक नोट्स. ओके. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, AFSPA, that is another topic. Then human trafficking, terrorism, militancy in J&K, nuclear doctrine, drug trafficking, border management and cyber security. ये जो 64 पेजेस हैं ये आप सैटरडे और संडे में पढ़ के एक बार थ्रू कर लो. ये सारा बेसिक आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू दी आंसर राइटिंग. अगर आपने पहले कहीं से पढ़ भी रखा हुआ तो वो सारी चीजें एक जगह पे सिंथेसाइज हो जाएंगी. जैसे साइबर सिक्योरिटी है अब जैसे एक टॉपिक, तो बॉर्डर मैनेजमेंट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल. तो इंडिया का बॉर्डर मैनेजमेंट कैसा है फिलहाल, कौन कौन से बॉर्डर्स में किस तरह का वर्कआउट चल रहा है, व्हाट इज द क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट विद इन द मिनिस्ट्री, न्यू इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस प्रोजेक्ट विच इज गोइंग ऑन, जो हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट में रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं. देन व्हाट नीड्स टू बी डन इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इन इंडिया, कौन सी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं. ऐसी साइबर सिक्योरिटी है. सो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, what are the motives, what are the types of cyber attacks, सीधा क्वेश्चन आया था मेंस के अंदर. ठीक है. फिर components of cyber security, what is the need for cyber security, what are the international mechanisms for it, इंडिया में लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, challenges क्या आते हैं, recent steps क्या हैं. So everything is there. So if you just read this 64-65 pages, you'll get the entire plethora of arguments related to security. Then what we will be doing on Monday classes, these question answers.
practice questions. We'll go through this practice question and then that's it. Security वाला काम हमारा खत्म हो जाएगा. And then we can focus upon the next area. What is the next area? किसने website देख लिया already? Economics, sir. Yeah. So that's the next area and we will be focusing on that. So means answer writing में उसमें चलेंगे. ठीक है? So that's it for today. Thank you. Enjoy your weekend. Focus on your optional during the weekend as it is already outlined. Okay. Any doubts you have, so anytime you can ask. बाकी आप लोगों के अगर कोई पर्सनल डाउट्स हैं या आप कुछ सेशन चाहते हैं तो उसके लिए आप मैसेज पे मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए. ठीक है. थैंक यू.